morning everyone. Good morning everyone. So it's a kind request to everybody that soon enough we will be having our chief guest entering this hall from that direction. So the time he enters, I would request everybody to raise and maybe have a round of applause for him. Right? Can we follow this? Thank you. कौन सा है? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है अभी रिकॉर्डिंग जो उधर भेज देना आपको यहाँ पे अच्छे सामने भी एंट्री वाला और तो छोड़ देना
आपको याद नहीं लगा? मुझे वेट हो जा रही है, पर याद नहीं कर। ये शिकायत आपकी कैसे? अरे हम ऐसा करेंगे, आप हम लोग के गार्जियन है, बड़े हैं। अरे आप ये शिकायत कैसे करेंगे? अशोक जी इसका समर्थन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं? हाँ। वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार कहाँ आप याद करेंगे? अरे आशा आपको हमने कई बार बोला भी है, रिक्वेस्ट भी किया है, चाहे उसमें भाटिया जी का विचार बदल गया हो या कुछ बदल गया हो, हमने कहा कि आईआईए में 2 जने को आप लोग परमानेंट सदस्य बना दीजिए। हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहे, आपकी इतनी बड़ी टीम। एक बात बताइए, मैं क्या बोला, वैसे आप सम्मानित हैं जहाँ हम हैं छाया की तरह। है ही है। अच्छा, बड़े कार्यक्रम में अगर अगर बड़ा कार्यक्रम है तो उसमें सबसे आखिरी में मोस्ट वेलकम के साथ अरे हम लोग को सदस्य बना लीजिए। तो सदस्य किस अब नाम अब आप बताइए, उस दिन आपने फूड वाला कार्यक्रम किया था, अखबारों में आया था। हाँ, अब नारायण जी कौन फूड से संबंधित नारायण जी मेंबर हैं? फ्रॉम बिगिनिंग वो अब हटाया इसलिए नहीं, मेंबर हैं ना। उसके बाद इसलिए नारायण जी 2011 में बने।
दीप प्रज्वलन हो जाए। देखिए उधर जरा फेस कर लीजिए। कोई लोग बना लेगा। उधर भी आ इधर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. A very good morning and my warm greetings to everybody present in this premise today. I am architect Ritika Srivastava and on behalf of Varanasi Architects Association, I would like to extend my warm welcome to our guest of honor, the respected Mayor of the city, Shri Ashok Tiwari ji. It is indeed an honor to be graced by your presence, sir. I would also like to express my sincere regards to all the respected dignitaries from the Uttar Pradesh Architects Association who have come from various parts of the state and are present with us today to celebrate this mega event. We are glad to have with us the President of Mahanagar Vyapari Mandal, Mr. Prem Mishra. Thank you for coming, sir. We also have with us the Vice President of Indian Industrial Association, Mr. R.K. Chaudhary. Thank you for coming, sir. We also have with us the Chairman of Engineers Association of Varanasi, Mr. Rakesh Shukla. Thank you for your presence, sir. आप सबका हमारे शहर बनारस में स्वागत है. So, ladies and gentlemen, allow me to quote the famous American writer Mark Twain, who has once very beautifully described our city, Varanasi, as the city which has been older than history, older than tradition and legends, and looks twice as old as all of them put together. And in our city, light and brightness has always been equated with positivity, and motivation is seen as the harbinger of good. So to start off this mega event with an auspicious note, we will have the lamp lighting ceremony. To do the honors, may I please request the chief guest, Shri Ashok Tiwari ji, and our respected dignitaries, Architect Jagesh Kumar sir, Architect R.C. Jain sir, Architect Shyam Lal sir, Architect C.P. Chawla sir, and Anurag Kashyap sir,
with architect Atul Rai sir to join us for the Deep Prajwalan. Anurag Kushwaha sir. May I request all the senior architects to be present for the Deep Prajwalan. गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय. We are grateful to all the media houses for their presence. Now, I would request our chief guest, Shri Ashok Tiwari ji, to please take his seat on the dais and embrace the stage with his presence. I would request architect Atul Rai sir to escort him to the stage, please. I would also request the following respected dignitaries to join us on the stage. Architect Jagesh Kumar sir, the President of UP Architects Association. Architect Rajesh Kumar Dikshit sir, the President of Varanasi Architects Association. Architect Ankit Agarwal sir, the Secretary of UP Architects Association. And Architect Himanshu Srivastava sir, Secretary Varanasi Architects Association, to join us on the stage. Can we have a thunderous round of applause for this wonderful panel on the stage? So with this energetic start, ladies and gentlemen, welcome to Satyapatha Samagam, a visionary architectural event that seeks to ignite creativity and innovation within the realm of architecture and design. This mega event is packed with multiple business and technical sessions, followed by brand performances and GBM. So we have all gathered here together today to celebrate and learn from the past, enjoy the present, and together build a better future. Moving ahead, now it's time to felicitate our respected members on the stage. Now I would request the following architects to please come on the stage. Architect Pradesh Kashyap ji, Architect Kunal Kalra ji, and Architect Payaswini to felicitate our chief guest with a token of respect on behalf of Varanasi Architects Association. Can we please have a great round of applause and maintain the energy of the room?
Dikshit sir to present architect Jagesh Kumar sir with a bouquet and express our gratitude for his presence. Can we please have the bouquet on the stage? We are grateful to architect Jagesh Kumar sir, who is the president of UP Architects Association, who is present with us in this mega event. I would also request architect Himanshu Shrivastava sir to present a bouquet to architect Ankit Agarwal sir, who is the secretary of UP Architects Association. Moving forward, I would request architect Rajesh Dikshit sir to come on the mic and address us with his wisdom. सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी लोगों में मैं देवी देवताओं का वास मानते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे मंचस्थ सबसे सरल सहज अशोक तिवारी जी महापौर, हमारे जागेश जी उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, अंकित अग्रवाल जी सचिव हैं, और हमारे वाराणसी के जो आर्किटेक्ट एसोसिएशन के सचिव हैं हिमांशु कुमार जी। हाल में जो है तमाम गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, जिनमें कि जो है आर.के. चौधरी साहब हैं, प्रेम मिश्रा जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, मनोज कुमार जी हमारे टाउन प्लानर साहब हैं। इसके बाद मीडिया के लोग हैं, सब स्पॉन्सर्स हमारे हैं। सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय चूँकि बहुत अधिक हो चुका है, इसलिए अब मैं बीच में न रोकते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो है डायस जो है उनको देता हूँ। The President of Mahanagar Vyapari Mandal, Mr. Prem Mishra ji, to also come on the stage. And I would request Atul Rai sir to please hand over a memento to him. And we are all grateful for his presence. Can we please have Mr. Prem Mishra sir on the stage? Let's have a huge round of applause for Mr. Prem Mishra, who is the President of Mahanagar Vyapari Mandal. Now I would request Mr. R.K. Chaudhary, who is the Vice President of Indian Industries Association, who is present with us, to come on the stage. And I would also request Architect R.C. Jain sir to be on the stage to felicitate him. Thank you for your presence, sir. We are grateful to Mr. Rakesh Shukla sir, who is the Chairman of Engineers Association of Varanasi. I would request you to come on the stage, and I would also request Architect Swadhin Verma sir to come on the stage to felicitate him. Is it it? We're grateful for your presence, Rakesh Shukla sir. We are happy to have architect Manoj Kumar, who is the town planner of Varanasi, with us. So I would request architect Anurag Kushwaha sir to come on the stage and felicitate him.
We also have with us Mr. Rajesh Bhatia, who is the member, who is the president of Industrial Association. I would request Pradesh ji to be on the stage and felicitate him with a momentum. Can we have a huge round of applause, please? Thank you for your presence, Rajesh ji. So, ladies and gentlemen, today I have the honor of introducing a man who needs no introduction. Our chief guest for the day, Shri Ashok Tiwari ji, is the mayor of the city, but is a public servant by heart. His strong compassion towards improving the city's infrastructure is definitely bringing in a visible change in our city. And under your leadership, sir, we are looking forward and hoping for more wonders to happen in the city. So, without no further ado, I would invite Shri Ashok Tiwari ji to enlighten us all with his kind words. Yeah. भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है थोड़ा ठीक से। आ रही। आज के इस स्थापत्य शिल्प समागम के आयोजित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगेश जी, सचिव अंकित अग्रवाल जी, राजेश कुमार दीक्षित जी, सचिव हिमांशु श्रीवास्तव जी, शहर का पूर्वांचल के जाने माने उद्योगपति मेरे बड़े भाई श्री आर चौधरी जी, रियासी जैन साहब, चंदर चावला जी, मेरे मित्र और विकास प्राधिकरण के टाउन प्लानर मनोज जी, वाराणसी व्यापार मंडल के जिसको मैं आजीवन अध्यक्ष करता हूँ श्री प्रेम मिश्रा जी, अतुल राय जी, हिमांशु श्रीवास्तव जी, अंकित जी, श्यामलाल जी टाउन प्लानर के जो बहुत अच्छा इंजीनियर से सीखा, और मेरे जो व्यक्तिगत आर्किटेक्ट है जो मेरे प्रोजेक्ट में, छोटे प्रोजेक्ट में जो मेरे साथ काम करते हैं, श्री किशोर कपूर साहब, अजय सिंह जी, सामने बैठे हुए पूर्वांचल के सभी बड़े आर्किटेक्ट, मैं किसी को छोटा नहीं मानता हूँ, हर आदमी अपने को बड़ा ही अपने अपने क्षेत्र में, भाइयों और बहनों, मेरे मित्र और बड़े भाई जिनका स्नेह आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता, अनाज जी,
2 दिन पहले मुझे फ़ोन किया तो मुझे आपके पास आना। हम कहा क्यों मेरे पास है? मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो कहा नहीं मुझे निमंत्रण देना। हम कहा मुँह से कह दीजिए। क्या भाई क्यों इतना खर्चा करेंगे, मुझे आप दे दीजिएगा नगद। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आऊँगा। तो कल आए। हम क्या भाई आप मेरे परिचित है, मैं मुझे कोई आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। अब जब मुझे बुलाएंगे, जहाँ कहेंगे, आने में जो समय लगेगा उतना ही समय है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास पद है वो मेरे संगठन और आप सभी लोगों का देन है। मेरा उसमें कोई मेरा व्यक्तिगत योगदान नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको जिसको हमारा संगठन टिकट देता, हमसे 2000, 5000 1000 अधिक वोटों से जीता, कम वोट से नहीं जीता। जो आज का विषय है आर्किटेक्ट, ये हमारे यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आदिकाल से स्थापत्य कला का जो विकास है वो अद्भुत है। और विश्व में कहीं भी आप जाएंगे, अगर उसकी तुलना अगर अपने हम स्थापत्य कला से करेंगे तो हम उसमें बहुत समृद्ध पाए देखे जाएंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, या जब इंग्लैंड अपना बहुत अपने वर्चस्व अपने जिसका सूरज कभी नहीं उगता था, इटली और जो पूर्व पश्चिम देश है उनके कुछ देशों में कुछ बिल्डिंगें आज भी धरोहर के रूप में हैं। इसलिए तो उनका किसी ने क्षति नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं। आज हमारे यहाँ जो भी मंदिर है, जो महल है पुराने, अगर आप देखेंगे तो अद्भुत उसमें स्थापत्य कला है। और न कहीं पिलर है, न कोई बीम है। कैसे बनाते होंगे? न कोई क्लास चलता होगा, न 3 साल 5 साल का कोर्स चलता होगा, न इंस्टीट्यूट कोई था। आज जो वास्तु कहा जाता है, 10-15 सालों में वास्तु का जो एक बहुत बड़ा 15-20 सालों से वास्तु क्या है, पूरा पश्चिम क्या होता है। लेकिन अगर आप पुराने जो भी धरोहर बिल्डिंगों में आप जाएंगे, पुराने हमारे सनातन जो जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे तो जो आज वास्तु की हम बात करते हैं उसमें 100% वास्तु का पालन होता है। कहाँ खाली जगह छोड़ना है, कहाँ हवा आना चाहिए। मैं कोई इंजीनियर हूँ, 8 साल के 8 साइज के विद्यार्थी रहे हैं। और विशेषकर जब दक्षिण भारत हम जाते हैं, क्योंकि हम जिस भाग में रहते हैं वहाँ जो भी मंदिरें पुरानी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं तहस नहस किसी काल में खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन जब हम दक्षिण भारत जाते हैं तो वहाँ अलग हम चीज पाते हैं। वहाँ भी जो मंदिर है, हजारों साल पुराने मंदिर अपने रूप में है। अब मीनाक्षी का मंदिर ले लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए तो आपको लगता है कि क्या हमारी धरोहर क्या थी, कौन सा ऐसी विधि विधा थी, कौन सी ऐसी विद्या थी जहाँ की आज भी न सीमेंट उस समय था, न कोई डिजाइन होती थी कि इस हाथ पर कितना बनाना है क्या। जो आज तो कंप्यूटर है, आप फिट करेंगे 5 मिनट के अंदर आ जाता है। उस समय कैसी विद्या रही होगी, कैसी प्रतिभा रही होगी, कैसे लोग रहे होंगे जो कि काम करते हैं। जब हम महाभारत कालीन जाते हैं, जब पांडवों और कौरवों में हुआ तो कौरवों को अलग राज हम दे देंगे, इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुआ। जो पढ़े उस समय का जो सबसे बड़ा वन था, उस वन को जलाएंगे। जो हम लोग पढ़ते हैं, कई महीने उस वन को जलाने में लगा। और जो भव्य इमारत के निर्माण हुआ, उसमें भगवान कृष्ण ने उस समय के जो अभी तक आर्किटेक्ट माने जाते हैं, विश्वकर्मा जी, या कुछ नाम में कुछ गलत है हो रहा, मैं पूछा भी किसी से क्या नाम था, मैं क्या कुछ ऐसे कुछ था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वही भवन था जहाँ की महाभारत युद्ध का एक नींव पड़ गई। क्योंकि जो बिल्डिंग बनी थी उसमें पानी कहाँ है, जल कहाँ है, इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है, हो पाता था। और दुर्योधन जहाँ जल नहीं था, अपना धोती उठा दिया, जहाँ जल था वहाँ धोती नीचे किया, गिर गया। द्रौपदी ने कुछ किया, कुछ कमेंट किया। वही चीजें एक युद्ध का बहुत बड़ा रूप था। उस
उस समय कैसा आर्किटेक्ट हमारा रहा हो, वो कौन सी शिक्षा रही होगी। आप सब बहुत ही योग्य, मैं इसमें जितने आप लोग हैं उसमें मैक्सिमम अधिकतर लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से बाई नेम बाई फेस उनके ऑफिस में जानता हूँ। लेकिन अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है अपना जो पुराना हमारा जो विधा थी उसको भी लेके चलना पड़ेगा। एक दक्षिण भारत एक मंदिर में गए, 5-6 फ्लोर का महल था, नीचे से ताली बजाने को ऊपर आवाज आती थी। इस महल का नाम वो कौन सा सब कौन टेक्नोलॉजी थी कि नीचे से अगर आप कर रहे हैं 500 मीटर दूरी को ऊपर जो ताली बजाते हैं तो आवाज आ रही है। ताजमहल और लाल किले के बारे में कई विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। किसने बनाया, क्या बनाया, किसका था, किसका नहीं था, कुतुब मीनार किसका था, ये तो भविष्य में खोज का विषय रहेगा। कुतुब मीनार जो बना, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है जहाँ से हमारे जो कराता आए थे उनका कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज भी नहीं है। अगर 150 साल पुराना अगर 100 अरब देशों का इतिहास हम देखेंगे वहाँ कुछ नहीं था। तेल के बाद 100 साल में जो उनका इतिहास है जो मुझे दिखाई देता है, उनका जो संपन्नता वो दिखाई देता है, वो 60 से लेकर 100 सालों का इतिहास है। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमें लगता है विश्व में अगर सबसे अधिक कोई धरोहर अगर कहीं टेक्नोलॉजी थी हमारे हिंदुस्तान में थी। और हम उसको भूल के नए सिरे से हम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप सब लोग जो है अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, अपने पुरानी जो चीजें अगर उसमें रिसर्च करेंगे। और बनारस एक ऐसा शहर है कि बनारस का जो सीवर प्रणाली है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पुरानी सीवर प्रणाली है। पहला ब्रिटेन का था और दूसरा अपने काशी का है। उस समय बनारस की आबादी में कहीं पढ़ा था, उस समय हमारे बनारस की आबादी 40,000 थी और 3 लाख लोगों की कैपेसिटी के अनुसार इसका डेवलपमेंट हुआ था कि 3 लाख जब काशी की आबादी होगी तो उस समय हमारे मैक्सिमम, लेकिन आज भी हमारे बनारस की आबादी आपका रिकॉर्ड 30 से 35 लाख की है। आज भी वो चल रहा है। हमें लगता है कि अपने जो पुराने चीजों उसकी धरोहर है उसको फिर से नए सिरे से एक बार रिसर्च करने की जरूरत है। और आज भी जो पुरानी हवेली पक्का महल बनारस में से कहा तो रिसर्च का विषय सबसे बड़ा अगर विश्व में हिंदुस्तान में कहीं है तो वो काशी है। काशी पुरानी सारे अपने वर्तमान रूप में है। पक्का महल आप चले जाइए, कोई ऐसा मकान नहीं है, मैं आपको बस विश्वास पूर्ण जिम्मेदारी पूर्वक कर रहा हूँ, पक्के महल में कोई ऐसा मकान नहीं है। कभी आप जाकर रिसर्च करिए जहाँ की किसी मकान में कोई भी छोटा या बड़ा मंदिर न हो। विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, मुझे कहीं से आदेश हुआ था आपको जाकर सर्वे करना है। गुजरात के लोग आए थे, आर्किटेक्ट आए थे, मैं इसलिए कर रहा हूँ मैं उनके साथ रात में 2 बजे 2:30 बजे जब कोई चर्चा परिचर्चा नहीं थी तब मैं उनके साथ घूमता था। एक मकान में आप मंदिर मिलेंगे और जो कि हजारों साल पुराने मंदिर है, पूरे पक्के महल का राजघाट से लेकर 80 तक पक्के महल में आप घुसेंगे। रात के 2 बजे 2:30 बजे आप जाइए, हर मकान के बाहर अंदर एक मंदिर है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने पुराने धरोहर मंदिर है। हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए, उसको रिसर्च करना चाहिए। और जो हमारी पुरानी संस्था है, सनातन धर्म का जो हमारे जो गुण है, जो हमारे विद्वता है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। मैं कोई राजनीतिक थोड़ा सा बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति नहीं, छोटा सा राजनीतिक व्यक्ति हूँ। जो मेरे मन में भाव था मैं आपके सामने प्रकट किया। हो सकता मैं अपने विषय के बारे में, क्योंकि मैं आपका विषय है, मैं आपके विषय में दखल थोड़ा सा किया। हमारे अनजान जनता को कोई बहुत मन में न रखते हुए मुझे गलत साबित न करें। आप सबने मुझे बुलाया, मैं विशेष रूप से अनुराग जी, डॉक्टर RC जैन साहब, मुझे RC जैन साहब का एक घटना मैं आप लोग नहीं बताऊंगा तो मुझे लगा पता नहीं चलेगा। सपा सरकार जाने के बाद बसपा सरकार जाने के बाद सपा की सरकार बनी। मेरे एक बहुत अभिन्न IAS अधिकारी थे जो मुख्यमंत्री मायावती के सबसे खास लोगों में थे। उस अधिकारी को दंडित स्वरूप धर्मा सचिव बनाया गया। तो उस समय उनको देखकर सभी अधिकारी भागते थे। मेरे जैसा व्यक्ति था जो उनके साथ परमानेंट रहता था, तो विश्वनाथ मंदिर के सचिव के रूप में, धर्मा सचिव के रूप में मेरे साथ जाते थे। हम लोग बैठक में मुझे बुला लेते थे
ये 2-3 के फाइल लेके मेरे पास आते थे। इनको लगा भाई आदमी करीबी है उनका जो बैठक में बैठ रहा है, तो भाई साहब ये 6 सही है, गंगा जी विश्वनाथ कैडोर से जुड़ जाती मंदिर से, समझे नहीं ठीक है। फिर जब मैं जाता था उनकी गजब आदमी है, कहीं हम यार पागल है क्या बच्चा भाव, पैसे 6-7 मकान टूट जाएगा, मैंने ये संभव चीजें बता रहे आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने मन में जो भाव कभी को देख के भागने लगा। जब आगे देखिए हमारे पास पूरा प्लानिंग है, तो विश्वनाथ मंदिर 2200 स्क्वायर फीट में था क्यों, और आज 5 लाख स्क्वायर फीट में मैं आपको बता रहा हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में अगर पर्यटक पूरे हिंदुस्तान के सबसे अधिक है तो 7,40,000 पर्यटक आए। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार के जो पर्यटन विभाग है उसका आंकड़ा है। तो पिछले साल 7,40,00,000 पर्यटक आए हैं किसी में। तो ये जब मुझे देखते थे तो भाई साहब ये अगर बात कर लेते तो ये मकान गंगा जी से, हमके भाई साहब क्या बात करते हैं महाराज, ये संभव है 700 मकान तोड़ के कोई गंगा जी को मिला देगा क्या, परिकल्पना करते हैं। मैं इनको देख के भागने लगा। और मैं आज बताना चाहता हूँ कि 700 कुछ मकान सरकार ने, माननीय मोदी जी ने खरीदा, और जो एक असंभव काम था आज उन्होंने विश्वनाथ कैडोर बनाया। और आज इस अहिल्याबाई का नाम होता है कि अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया था। वर्तमान जो स्वरूप है हमारे मंदिर का अहिल्याबाई ने बनवाया, और आगे भविष्य में जब भी नाम होगा हमारे माननीय सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम होगा, तो उन्होंने जो वर्तमान मंदिर है माननीय मोदी जी ने बनाया, जो असंभव था, कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसा उन्होंने काम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैं आपको ऑफर देता हूँ, हमारे पास नगर निगम में कोई अभी कोई नहीं है, हम लोग का कार्यालय सदन नहीं है। हम लोग एक टेंडर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसका सबसे अच्छा आएगा वो हम लोग क्या कहते हैं उनको अपने सदन बनाने को देंगे। आप सब उसमें आमंत्रित है। सदन एक अच्छा बनाना है, 60,000-65,000 स्क्वायर फीट में बनाना है। मोदी जी का क्षेत्र है, जब बने तो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज आए तो काशी का सदन कैसा है, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। आप लोग उसमें भाग लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको स्वागत। Thank you, Ashok Tiwari sir, for the wonderful words. And under your leadership, we will definitely make Varanasi a very different and a better version of what it is right now. Now, I would request our respected senior architect, C.B. Chawla sir, to come on the podium and express the vote of thanks to this session. आदरणीय महापौर माननीय श्री अशोक तिवारी जी, मंचासी UPAA अध्यक्ष श्री जागेश कुमार जी, अंकित अग्रवाल जी सचिव UPAA, राजेश दीक्षित जी अध्यक्ष VAA, हिमांशु जी सचिव वाराणसी आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी के उपस्थित सभी आर्किटेक्ट बंधु, उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम के प्रायोजकगण, सबसे पहले तो मैं आज के आयोजन के मुख्य अतिथि महापौर श्री अशोक तिवारी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने इस सभा में आना स्वीकार किया। आपका उद्बोधन वास्तव में हम सभी आर्किटेक्ट्स को बहुत प्रेरणा देगा। आज हम सब इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं जिसका थीम है
challenges in the development of heritage cities. और जिस शहर में ये आयोजन किया जा रहा है संभवतः ये विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर है। ये शहर तब भी था जब होमर ने इलियड की रचना नहीं की थी, ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था और रोमन साम्राज्य का न उदय हुआ था और न अंत। काशी का उल्लेख भारत की सभी पौराणिक कथाओं में है। यह शहर बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल रहा है। अनेक जैन तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया है और यहाँ का मणिकर्णिका तीर्थ गंगा जी के अवतरण से सहस्त्राब्दियों पूर्व भी अवस्थित था। पुराणों के अनुसार तो मणिकर्णिका कुंड का अस्तित्व लगभग 20,000 वर्ष पुराना है। तो ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाग करने के लिए आप सभी का मैं वाराणसी आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि 2 दिन के इस कार्यक्रम में मंथन के उपरांत कुछ अमृत अवश्य निकलेगा। मैं आभारी हूँ UPAA के अध्यक्ष श्री जागेश कुमार जी, सचिव श्री अंकित अग्रवाल जी और सभी पदाधिकारियों का कि आपने हमें इस कार्यक्रम की मेज़बानी सौंपने का अवसर दिया। यहाँ उपस्थित वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए हुए सभी आर्किटेक्ट्स को मैं उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आर्किटेक्ट प्लानर मनोज कुमार जी और हमारे जो भी गेस्ट स्पीकर्स कोई जो अभी शायद पहुँचे नहीं हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी एसोसिएशंस के पदाधिकारी जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। श्री प्रेम मिश्रा जी, श्री RK चौधरी जी, श्री राकेश शुक्ला जी, श्री राजेश भाटिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस भव्य कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम के आयोजन को संभव बनाने के लिए जिनका योगदान है उन सभी प्रायोजक कंपनियों के प्रतिनिधियों का आभार मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से करना चाहूँगा। और इसे मुख्य रूप से जैगवर हमारे प्राइम स्पॉन्सर है, उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं सभी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया। और अपनी एसोसिएशन के जो जिन नौजवान सिपाहियों ने दिन रात मेहनत की और जिनके अथक परिश्रम की वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया, संभव हो पाया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष रूप से पयस्विनी जायसवाल, रितेश कश्यप, वी शुड गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कुणाल कालरा, शैलेंद्र सिंह, तनवीर आलम, रोहित, अतुल, सतप्रकाश धवन, मेहुल, रितिका श्रीवास्तव, भारती एंड नितिन, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबने दिन रात मेहनत की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ होटल ताज के मैनेजमेंट और उनके कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए। और अंत में मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ यदि त्रुटिवश इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहां हमारे आमंत्रण पर आए। और यदि त्रुटिवश मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो मैं एसोसिएशन की तरफ से क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद।
leave, I would request everybody to stand up and have a huge round of applause for him. क्या ना है क्या आप तो मनोज जी रहिएगा अभी जीवन अध्यक्ष है मंडल का जीवन अध्यक्ष कंप्यूटर में जो दूसरे लोग पर दूसरा ना मान जाए मुझे पता है कि सही बनेगा So it's a request to everyone to please be seated again. Moving forward, we have the technical sessions online, business sessions, which are going to happen just after this session. You've been a wonderful audience, and now I'll hand over the mic to Architect Payaswini to carry on with the further sessions. Thank you. So first of all, I request everyone to please be seated on the table because our next session is going to be start. That is technical presentation by the exhibitors. As we all know, the exhibitors, the brands, the sponsors we are getting, and the sponsors we have actually few more sponsors apart from exhibitors. So I will let you know the names also. So actually, I am not prepared for this session. Sorry for that. Okay, thank you so much. First of all, I want to thank you all the sponsors because I already texted them to that without this sponsor, the event is not going to be possible. Everything stops on the finance, everyone knows. So let's start the business session. And our title sponsors, Jaguar, is going to present a PPT of 15 minutes. So please, Jaguar, who is going to handle? Vidhanji. Atul sir, Jaguar. Sorry for the inconvenience, I guess there is some issue. Okay. Yes, Vidhanji. Okay. So I would like to invite Mr. Sunil Tripathi, State Head of Jaguar Company. आज सुबह से जो बातें हो रही हैं यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले तो मैं जयगढ़ की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी के लोग हैं डेलीगेट्स आए हुए थे। मेयर अशोक तिवारी जी ने बहुत सारी बातें बताई जिसके बारे में आप सब लोग बड़ी बातें जानते हैं क्योंकि आप आर्किटेक्ट एसोसिएशन से हैं, आपका ये प्रोफेशन है। काशी की बात करें, बनारस को जो कहा जाता है ये प्रकाश देने वाली नगरी कहा जाता है और ये यहाँ से जो प्रकाश निकलता है वो सारे विश्व में फैलेगा। ये कामना मेरे ख्याल से सब भारतवासियों की है। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक इसका रखा हुआ है, स्थापत्य, शिल्प शास्त्र या फिर घर बनाने की कला। अब इस कला को हमारे तरफ से और कैसे उसमें आपको सहयोग दिया जाएगा वो है हमारा एक्सपर्टीज जो हम जैगवार में बाथरूम और नाइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं।
जल्दी बुला लिया गया, 2 मिनट ऐड कर दिए गए। कोई बात नहीं। जब तक ये लोग कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश दीक्षित जी, जो वाराणसी एसोसिएशन आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी शुक्ला जी, अजय सिंह जी, मुदिता कपूर और हिमांशु श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसका परिकल्पना की ये यहाँ इवेंट हो और वाराणसी में एक इस तरीके का आप सबको एक इवेंट का मौका मिले देखने का। यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन से जागेश जी और अंकित अग्रवाल जी का धन्यवाद है कि उन्होंने इसके लिए जो भी प्रयास है वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन का, उसको सहयोग दिया। चावला जी ने वोट ऑफ थैंक्स में बहुत अच्छी बातें करी। जिन जिन लोगों का उन्होंने अभिनंदन किया उनका मैं भी अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी नाम मेरे से भी छूट सकते हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से मैं भी माफ़ी मांगता हूँ कि जिनका भी छूट गया वो नाम, वो मुझे माफ़ करें। Now let's start with the presentation. I think I'll not take much of the time and it will not be boring. Jaguar, you all know that we are into bathroom spaces initially, which is our core. But coming to the solution, when we call the solution, घर में बनाने के लिए 2 things are more important, that is bathroom fittings and bathroom solutions or lighting solutions. The company is graduated to that space, that we are now complete bathroom and light solution company. I think this is not running. Vivek, if you can run that. Jaguar architecture जिस तरह आप लोग करते हैं, Jaguar is also a group of architecture. The group architecture of this particular group, which we call Jaguar group, consists of Jaguar, which is for bathroom and lighting solution, which is a premium solution for bathroom and lights. Then RT is a luxury brand within Jaguar group. Jaguar lighting is a comprehensive lighting solution in indoor comprehensive solution. Created for the premium segment, the Jaguar brand offers Indian consumers access to the best of choices in international quality bathware. Its complete bathroom solutions philosophy lets customers choose from a wide range of bathroom and lighting products. India's most trusted bath brand, Jaguar, is an undisputed market leader, not only for the wide range of bathroom and lighting products that it offers, but also for its quality. Jaguar products can withstand tough Indian usage conditions for decades. In fact, every Jaguar product comes with a 10-year warranty, supported by unmatched advanced customer service that's easily accessible nationwide. Recognized as a global super brand with a presence in over 45 countries, Jaguar is a one-window solution brand for anyone seeking to build a beautiful coordinated bathroom. Jaguar, the undisputed leader in the building category, offers designs to suit every need and taste. From the classical to the modern and contemporary. I'm happy to share that Jaguar Group is trusted super brand for 12 years in a row. And to get this super brand 12th year in a row, we have 8 state-of-art manufacturing facilities, 7 in India, 1 in South Korea, which are spread over 3.29 lakh square meter. Jaguar Group products are perfect synthesis of form and function. What we make at Jaguar is a perfection of man, machine and technology. And that is why we got these products which are crafted like jewel. Artis is our brand which showcases the luxury which we deliver.
two displays outside this hall. One of Vic range, which is neoclassical design, which we have recently introduced in RTs, and Laguna, which has been introduced in Jaguar. These two forms can have a visual outside this hall, and you can actually experience those two designs. Coming to lighting solution, we have graduated from making these chandeliers, which we are our core for last 15 years. Now we are into a complete lighting solution, providing complete indoor, outdoor, landscape, facade, and even automation. And complement to this, we have Jaguar switches also recently launched into our portfolio. These are Jaguar destination stores across the globe. We are 13, we have already developed 5 years in a row. In this coming financial year, we will be having 5 new destinations across the globe, and 5 in India, Jaguar Worlds will be coming, where we can have definitely the out-of-class displays of all the products and solutions which we provide. Now coming to the solution, when we say that premium is there, luxury is there, definitely Jaguar is there, then we'll have a solution for value housing also. ESCO is the brand which we started with. This is the parent company. We started with ESCO in 1960, and this legacy of 63 plus years is delivering the excellence of manufacturing. So we can have a The value bath brand of the Jaguar Group, ESCO, is the name that redefined the bath industry in India in the 1960s by becoming the benchmark for the organized bath fittings market, by offering excellent functionality, efficiency, and value for money. ESCO's perfect balance of quality and price in faucets, sanitary ware, water heaters, and accessories, supported by a 10-year warranty and Jaguar Group's customer service assurance, still define base quality standards in India. That's why it's the brand supporting the Government of India's noble mission
of affordable housing for all. Happy to share that we are proud partners of Pradhan Mantri Awas Yojana, which is happening in different parts of India in ESCO, from ESCO brand. And coming to the excellence of manufacturing, so I'll just give you a brief of what the group is about. We have 8 manufacturing facilities which are already introduced, which delivers 2.9 million bathrooms every year, 39 million bathroom fittings annually we are producing. And we have a most advanced lighting facility spread over 55,000 square meter, which produces about 25 million pieces annually. Sanitary ware plant produces over 3.3 million sanitary ware pieces annually and is spread over 1 lakh square meter. To get an advancement in the finishes, we have introduced PVD powder, PVD coating products also in the plant. The plant is a zero discharge plant which does not deliver any effluents into the outside. We recycle almost 5,000 metric tons of water annually. Over 8 tons of chrome is recovered annually from the manufacturing process. And to make it a net zero plus build, we have a 13.5 megawatt of solar power generation, which mitigates over 18,500 CO2 combustion in the environment, which mitigates. And we also reclaim rainwater. That we can have a manufacturing video, maybe. Look fresh and new. We have BMS, bathroom maintenance services, also available across India and globe, and it can be availed with our customer care support. Now coming to the manufacturing DNA which we have, this is the portfolio which we carry among Jaguar Group. Faucets are there, sanitary, light, wellness and shower enclosure. The complete portfolio of products which will provide a complete solution of bathroom and lighting solution inside a house. This is a unique proposition of the Jaguar Group, where we perceive something, we design something. Like you are also architects and designing houses, we are also seated with architects and designers who design our products. Like the 2 products which are outside displayed, one is designed by Mathathun and Antonio Rodriguez, Laguna, and Vic is also there, which is Danone Meloni. They have designed this product. So these 2 products are showcased over there, which have been a designer product portfolio of Jaguar and RD. We keep on innovating products like the products which we already carry in the portfolio. Like in the COVID and the pandemic period, we used to have these sensor-based products and foot-operated products. So that was an innovation. Immediately, company came into production of these products, which were required at that moment. This is the design team which is involved behind the scene of getting a product which are already, I think, installed. One of the product will be there in your houses also. Designs which complements complete bathroom and lighting decor in the house. The R&D team processes and testing which are rigorous, and we can have these products tested for as per the Union norms and the Indian conditions. These are some of the quality standards and certification which we have
throughout the globe. Technology for products like water saving, energy saving, touch operations, remote operations, easy clean functions, and sensor-based operation products are there in the portfolio. We provide a solution for residential projects, commercial, outdoor, and as well as for the government projects which we are carrying. Can we have the Vivek? Can we have the AV? Back. To go back. I'll leave you with this manufacturing process which we follow at our plant to deliver the best in class products for your house, and we are truly made in India for the world. Thank you. Jaguar Group, a rapidly growing multi-diversified global complete bathroom and lighting solutions brand. Jaguar Group products are the perfect synthesis of form and function, exceeding customers' expectations in every aspect via continuous product innovation and futuristic technologies. A manufacturing strength built over 63 plus years to deliver quality based on global standards. A brand that inspires worldwide to rediscover the joys of water and light. Jaguar Group maintains single-level quality in all its 8 manufacturing units, including one in South Korea, ensuring high-quality products that exceed the ordinary, reimagine the present, and create the future. Jaguar Group astoundingly delivers an astonishing 2.9 million bathrooms each year. Their exceptional manufacturing prowess is evident in the production of over a staggering 39 million bath fittings annually. The group also possesses the most advanced lighting plant in India, situated in Bhiwadi, Rajasthan. Jaguar Group, a rapidly growing multi-diversified global complete bathroom and lighting solutions brand. Jaguar Group products are the perfect synthesis of form and function, exceeding customers' expectations in every aspect via continuous product innovation and futuristic technologies. A manufacturing strength built over 63 plus years to deliver quality based on global standards. A brand that inspires worldwide to rediscover the joys of water and light. Jaguar Group maintains single-level quality in all its 8 manufacturing units, including one in South Korea, ensuring high-quality products that exceed the ordinary, reimagine the present, and create the future. Jaguar Group astoundingly delivers an astonishing 2.9 million bathrooms each year. Their exceptional manufacturing prowess is evident in the production of over a staggering 39 million bath fittings annually. The group also possesses the most advanced lighting plant in India, situated in Bhiwadi, Rajasthan. Sprawling over 55,000 square meters of floor area, capable of producing an astounding 25 billion pieces annually. The manufacturing facility utilizes advanced machinery such as surface mount technology machines, automated assembly lines, laser cutting and engraving machines, testing and quality control equipment. In addition, to match the global standards at every level of production, the plant also has a robotic photometer to manufacture world-class lighting products of exceptional quality. Over 3.3 million sanitary ware pieces are produced in its highly advanced sanitary ware plant situated in Bhachau, Gujarat, spreading over 100,000 square meters of floor area. The manufacturing facility produces high Thank you so much, Sunil Tripathi sir, for giving this wonderful presentation. And I hope so कि जैकवार ने जो भी न्यू सीरीज लॉन्च की, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उससे आप लोग वाकिफ हो गए होंगे.
So our next presentation is by Rajesh Agency. ये राजेश एजेंसी जो है वो लखनऊ और वाराणसी दोनों जगह इनका ऑफिस है और इनका प्रेजेंटेशन के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट संस्कृति एंड सत्येंद्र तिवारी जी ऑन स्टेज. We are Rajesh Agency. We are based Lucknow and Varanasi, both places. We deal in UPVC doors, windows, modular kitchens, and interior designing products. We are one-stop solution for all your interior needs. We deal in UP, Bihar, MP, everywhere. We are collaborated with Rehau, Hafle, Indoline, Grass, Eluplas, Kesebuma, Hetic, and Carousel also. 1, 2, 3. We deal in trunky projects as well. We have done many recent projects like CRPF Camp Chakia, Vidya Gyan School Sitapur, Income Tax Office at Lucknow. एक साल और बतिया के बताओ. Good afternoon, everyone. As you know, that we are dealing into many products. Primarily, UPVC doors and windows. We are dealing into Eluplast. Eluplast is a German product. It is available in 120 countries worldwide. This is the only product available in the world which is available with all variety of colors, warranty and support. Like as we have 2 branches and very soon we are going to open 2 more branches in Allahabad and Gorakhpur. So we are trying to get more business from this Eluplast doors and windows. Eluplast UPVC, we are giving 15 years warranty primarily into the profile as well as 5 years warranty and on hardware. Hardware we are taking Killam, GU and other. This is primarily an architectural design. We have many designs like 10 turn windows, openable windows, and almost 15 colors we are using. Secondly, modular kitchen. Indoline, we are again a distributor for various regions. Indoline is a product we are using into kitchen, wardrobe and modular furniture. Indoline again a Nasik based company. Primarily it is coming from a company from Dubai. They have the plant in Nasik and we are catering to all designs. Primarily we are using the hardware like Hetic, Hefle, Grass, Blum, Kesebuma, Larenza, and we are making the product according to the requirement of the customer, requirement of the family, and the carcass we are using is HDHMR, BWP ply, BWR ply. This is what we are using in Indoline. Yeah, please run the presentation of Indoline.
The ever-growing support for industrial excellence makes Nasik a perfect setting that empowers the country's foremost modular furniture brand. Catalyzed by Dubai's Al Huzaifa Group, Indoline carries a prideful history of over 3 decades of supplying India with customized modular furniture. With more than 2 lakh square feet shop floor spread over 3 factories, with 1 dedicated unit for glass processing, Indoline is at its zenith in delivering projects of any scale. Supported by 2 warehouses of 30,000 square feet area and 30,000 square feet display showroom in Nasik, our complete facilities stand tall with 750 plus skilled employees as symbols of our power to deliver. From designing to engineering to production and installation, we take pride in our professional teams that make all steps possible with unparalleled quality. We conjure wardrobes and beds that capture the essence of security, bliss and warmth that contains and heals. We create vanities and TV units that uplift and enhance your user experience. We design kitchens where togetherness thrives and affection is expressed with food. Our creative design team constructs ideas virtually that helps you decide how your product will look, feel and work. We have the power to execute projects of any scale with style and elegance. In addition to an ISO certification, we are proud to be a Green Coast certified business. Whatever be your business, hospitality, residential, commercial or institutional, we engage a multi-faceted trans-industrial service that engineers and crafts to the tune of your requirements. Over the decades, we have delivered to several prominent industry players. Not only in India, but even internationally. Brands that run spaces completely adorned by the creations of India. Brands that have happy and satisfied customers, which we are proud to contribute towards. As Ralph Cagnan says, design is a process for making things right, for shaping what people need. And Indoline has power to do. एक्चुअली होता क्या है, किचन और वार्डरोब इतना इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है कि हम लोग कहते तो हैं किचन वार्डरोब, लेकिन उसमें इतने डिस्कशंस होते हैं जो हम लोग नॉर्मली फैमिली के साथ 1-to-1 करते हैं एज पर द डिज़ाइन ऑफ द आर्किटेक्ट, बिकॉज आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के बिना कुछ होता नहीं है. आर्किटेक्ट का डिज़ाइन प्लस द कस्टमर हु इज गोइंग टू यूज द किचन एंड वार्डरोब, वो डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मेरा सिंक, बिकॉज होता क्या है कि नॉर्मली जितने भी लोग किचन वार्डरोब बेचते हैं वो कुछ पॉइंट्स पर बिल्कुल लैक करते हैं. बिकॉज वी आर द कंसल्टेंट, अगर हमारा जो सिंक एरिया है उसको हमें बाकी एरिया से कैसे आइसोलेट करना है विदाउट शोइंग कि वो आइसोलेटेड है, वहाँ कौन सी प्लाई लगनी है, उसका डिस्टेंस हॉब मतलब चूल्हा से कितना दूर रखना है,
और जब हम वहाँ बर्तन धोएंगे तो हमारा हाथ कितना ऊपर जाएगा, उस बर्तन को हमें वहाँ रखना है। वो डिस्टेंस लर्निंग, वो डिस्कशन हम कस्टमर से भली भांति कर लेते हैं। उसके बाद वो जो बर्तन हम धोते हैं, ऊपर सुखाते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं उसको दूर रखते हैं। हमारा कौन सा हाथ कैसे चलेगा उस बर्तन को हटाते हुए, लेफ्ट या राइट, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है। हॉब यानी चूल्हे पे जब हम काम करते हैं तो हमारा हाथ राइट चलेगा कि लेफ्ट चलेगा, मसाले हम उल्टे हाथ से उठाएंगे, सीधे हाथ से उठाएंगे, या हम ऊपर वाले यूनिट में मसाले को रखेंगे। हमारा प्रेशर कुकर कहाँ रहेगा, हमारे छोटे बर्तन और जो 5-5 किलो के आटे वाले बर्तन वो कहाँ रहेंगे। ये सारा डिस्कशन एक लेंथी प्रोसेस होता है जो सिर्फ वही कर सकता है जो उसको जानता हो, जैसे कि इंटोलाइन एंड राजेश एजेंसी। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है उसका फेशिया। हम किचन कितना अच्छा डिज़ाइन कर लें, लेकिन अगर उसका फेशिया हमारी एस्थेटिक्स को मैच नहीं करता है, जो कि हमारी सीलिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, वार्डरोब्स हो गए, कर्टन्स हो गए, बिकॉज हम लोग क्योंकि इंटीरियर के एक्सपर्ट भी हैं, तो हम लोग जब वो करते हैं तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। हाँ, वो बात सही है कि जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके बाद हम कस्टमर को ये बताते हैं। उसके बाद उसके बजट को कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके घर में कितने मेंबर्स हैं जो वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, क्योंकि वेज और नॉन वेज होने से हमारा एरिया किचन का हमें बढ़ाना पड़ता है, और उसके जो जो डोर्स होती हैं, डोर्स के सेक्शंस होते हैं, वो बढ़ाने पड़ते हैं। इसीलिए वो हमें उसका डिस्कशन करना पड़ता है। फिर उसका जो चिमनी है, चिमनी कहाँ लग रही है, कई लोग आइलैंड पे ले लेते हैं चिमनी, थोड़ा सा एक चॉपिंग एरिया अलग होता है, आइलैंड ऊपर से लटकता है। कई बार हम चिमनी को विंडो के ऊपर ले लेते हैं सो दैट उसका सक्शन इतना अच्छा हो कि जो हमारा वहाँ गैस हो, धुआं हो, बाहर तुरंत निकल जाए। ये सारे पॉइंटर्स डिस्कस वही कर सकता है जैसे कि राजेश एजेंसी एंड आर्किटेक्ट्स। उसके बाद जो उसका फेशिया है वो लैमिनेट पे जाएगा या लैकेट ग्लास पे जाएगा, वो सब डिपेंड करता है कस्टमर की कॉस्टिंग कैसे है, या पीयू पर जाएगा। ये सारा डिज़ाइन करने के बाद हम वो कस्टमर को ऑलमोस्ट 40-50 दिन में प्रोडक्ट को हैंड ओवर करते हैं, जो नासिक से बन के आता है। अब हम वार्डरोब की बात करें तो वार्डरोब में भी आता है, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें यार ग्लास ऐसा वार्डरोब दीजिए जिसकी 9 फीट हाइट हो। नॉर्मली जितने ब्रांड्स हैं, हम जैसे ही उसको 9-10 फीट का वार्डरोब बोलेंगे तो दे स्टार्ट स्वेटिंग, बिकॉज 9-10 फीट होने का मतलब लोकल ब्रांड जितने उनके पल्ले लटक जाएंगे। बट इंटोलाइन या राजेश एजेंसी को ये पता है कि उसमें कहाँ सपोर्ट देना है, कौन सा बेस मटेरियल लेना है कि जो लटकेगा नहीं, एब्सोल्युटली नो। ये डिज़ाइंस, उसके बाद हमें जो मिरर देना है वो फ्रंट में कैसा देना है। कुछ लोग कहते हैं हम शक्ल देख के अपना वार्डरोब खोलना चाहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हम सी थ्रू वार्डरोब लेना चाहते हैं, क्रॉकरी रखना चाहते हैं, हाफ हमें स्टडी बनाना है, हाफ हमें वार्डरोब बनाना है। ये सारे डिस्कशंस हम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने किसी कस्टमर IAS ऑफिसर लखनऊ में, जिसको हम वॉकिंग वार्डरोब हमने उसको बेचा। वॉकिंग वार्डरोब आजकल एक वॉकिंग क्लोजेट आजकल एक बहुत ही फैशन में आ गया, बिकॉज नाउअडेज पीपल आर यूजिंग वन रूम, particularly one room as a wardrobe room, which is called walk-in closet. वो हमें बाहर से दिखता है कि अंदर हमारे रूम में क्या क्या हमारा है, वो हमारा प्राइवेसी रूम हो जाता है, जिसमें अपने हम कपड़े रखते हैं, शूज़ रखते हैं, टाई रखते हैं, बेल्ट रखते हैं, ज्वेलरीज रख सकते हैं। तो ये सारे फैशन की जो चीज़ें, जो ट्रेंड की चीज़ें हैं, क्या उस घर के लिए ज़रूरी हैं, क्या उनके बजट में आएगा। राजेश एजेंसी विद द डिस्कशन ऑफ आर्किटेक्ट वी कैन डू इट परफेक्टली राइट। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद हम we are distributor again for Rehau. Rehau is a German product. Again, Rehau में हम लोग यूज करते हैं PVC फ्लोरिंग, हाई प्रेशर लैमिनेट, और इसके कोरियन आप जैसे जानते होंगे, कोरियन इज ए प्रोडक्ट, इट्स लाइक बेंडेबल नॉन बेंडेबल। हम किचन के टॉप पे भी लगा सकते हैं, हम इससे मंदिर बना सकते हैं, CNC कटिंग करके डिजाइनर एक फॉल्स वॉल क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी हम अपने फोटोग्राफ बना सकते हैं। तो सारी टीम हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए आप कभी भी मेरे स्टॉल पे आ सकते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि हम किचन अच्छा करते हैं, वार्डरोब अच्छा करते हैं, तो वी आर ऑफरिंग अप्लायंसेस आल्सो, लाइक हेवले अप्लायंसेस एंड कैरोसेल। हम लोग उसमें भी बेस्ट है। रीजन भी कि अगर हमने हॉब दिया है, कस्टमर को चिमनी दिया है, तो हमें ये पता है कि उस किचन में चिमनी का सक्शन पावर कौन सा लगेगा, आइलैंड चिमनी कैसे सेटअप होगी। उसके बाद उसमें जो सिंक एरिया है वो डबल बाउल लेना है, सिंगल बाउल लेना है, या सिंगल बाउल के साथ ही हम अपने बर्तन धो के कैसे थोड़ी देर के लिए सुखा दें जिससे वो पानी ड्रेन आउट हो जाए, वापस उसको हम दूसरी जगह रख दें। तो ये इसका फॉसेट है।
फॉसेट भी हम जो सिंक एरिया है वो हम कैसे जैसे क्वार्ट्स आजकल बहुत चल रहा है, तो क्वार्ट्स हम आपको जो किचन टॉप है उसमें क्वार्ट्स और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक लास्ट मेरा पॉइंट है दैट वी आर डीलिंग इनटू वेरियस इंटीरियर प्रोडक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स वी आर हेल्पिंग लाइक आर्टिफिशियल ग्रास, टी प्रोफाइल्स, जितने भी और लूवर्स, चारकोल पैनल जो आपके एक एक वॉल को हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो वी हैव ऑल एक्सपर्टीज फॉर दिस। प्लीज विजिट माई स्टॉल हियर एंड एनी क्वेरी यू हैव, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप स्ट्रेट अवे मुझे पूछें, आई एम हियर टू आंसर एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज। So thank you. I would like to add one point कि जैसे हमें पता है लोगों को बहुत डाउट रहता है कि why to go with modular में क्यों जाना है। तो modular utilizes your space, तो modular furniture is very important। आप इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो फ्यूचर में, like you can move one thing from another place। तो इसमें आपका वेस्टेज नहीं जाता है, कोई भी पार्ट आपका खोलेगा दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए मॉड्यूलर फर्नीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन आई शो यू पीपीटी फॉर आवर शोरूम टूर। एवी प्लीज switch it to next। Thank you so much, Sanskriti and Satyaj ji, for this wonderful presentation. Next, I want to invite Nishan Badlani ji and Petros F. Augustinus from Prayagrix. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Payaswini, for inviting us. First and foremost, I would like to say that I am Dishant Badlani. He is Petros Augustinus. He is the CEO of our company, and we are from Pradesh Products Limited. Thank you very much. It is a privilege to be amongst the most senior and very young architects. It is a great combination, and we feel a lot motivated coming here and presenting our products and the company. So I would like to start I am the third generation in Praya Clay Products, and we are an 86-year-old company based out of Varanasi. हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल हैंडमेड ब्रिक से, और आज जो यहाँ पे सीनियर आर्किटेक्ट सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से we are now making more than 70 different types of blends of bricks,
in different formats, different textures, different colors, different finishes. ये जो हमारी bricks की range जो हमने बढ़ा ली है इतने time में, and the supply, our supply extends to across India. We are exporting all these bricks to the UK market, Europe, and we are one of the top 5 clay product manufacturing companies in India. With this, after we started exports, and now we are again back to our base, and we are focusing upon sustainable building material, which comes under the green building structure, the ecotherm blocks. Can you please start the presentation for ecotherm blocks? Next slide. I would like to introduce Mr. Petros Avgoustidis, who will be introducing you to this revolutionary building material, and he'll be briefing you about the details of this product. Petros. Hello, ladies and gentlemen. Thank you for having me. I'm One not a very second, good... Petro, 1 second. अगर इनके accent में कुछ issue हो तो आप मेरे से check कर सकते हैं. एक बारी मैं explain कर दूँगा उसको. Thank you for having me. It's a very nice thing for me to talk to architects, because architects have two assets. First one, they're artists. They design. Second, they have the math in their head. They want to bring at the end a project to the owner that they will return next year and show it to get the other project. The issue here is greenhouse. The issue here is to show you the blocks that now are 95% of the market of Europe. They're coming in strong in the United States. We are selling from here to Australia. We are selling from here to the US. We're selling from here to Malaysia. And we don't sell from here to Delhi. And we don't sell from here, quantities. That's the irony of it. That's the irony. And the irony is understandable. Why? Because you don't know it. What I hear from everybody, whether it's a builder, what is the cost of the brick? The cost of the brick is irrelevant. The cost of the finished wall per square meter is relevant. Because when you're using 16 pieces per square meter, instead of 57 from a classic brick, that means that you have a labor force that will move 6 times faster. You will finish your floor 6 times faster, and you will go to the next one. And what is at the end the gain for the project manager? Because I've been a lot of times project manager. The gain is the return on his capital. To deliver the project on time, and get his fees and go move to the next, and create the name of a project manager who does greenhousing. With our blocks, with a VP product, which is this, if you make a 2-floor housing, you don't need cement beams. The strength of this brick is 15 Newton per square millimeter. Nothing in the block industry worldwide brings 15. Our counterpart, which is Wienerberger in the south, where they go crazy, they're using only blocks there. It's at 7. We're at 15. Why? Well, I'm not a magician. Mr. Kisan is not a magician. It's because Uttar Pradesh clay, due to the millions and millions of years of the Ganges overflow, has the best clay in India where anyone can find. And we're sitting right smack in the middle. And you are next to us. I'm not saying for us that, for me, to sell. I have a saying. They say that there's a norm, that the customer is always right. My view is different.
the customer is always wrong. Once he is informed and what he chooses is right. But first he has to be informed. He has to know that this plate has a lot of salt. And he has to try it. If he doesn't like it, you leave it. Another question I hear about many is, well, it's a new thing, it's an experiment. What experiment? I did this first time 20 years ago in Europe. I designed those plates. And I designed for India. So it's 20 years. 20 years experiment, that's a very big experiment. There's nothing to experiment here. Another question that many of you will have, logically, will be, okay, do the masons know how to do this? We solved this issue in 2 hours. The first load that will come to the project will be followed by 2 of our people. They will show what we have in the stack. They will build it. And then they will sit back and put the other people do the rest. By the time they leave, within the day, your people are experts. And we have here an oxymoron. Oxymoron is a Greek word, and I'm a Greek, by the way. We have an architect here, a young architect, who uses only blocks here in Varanasi. And there are architects who just heard about them. It's our fault. And that's why we came here. I can show you the presentation and everything. It will run its course. We can give you a soft copy, we can give you brochures, we can give you anything. But at the end of the day, I want you to use this product only on one condition. That if you have to do your own house, you will use it. Then you have you are confident you can do it for everybody. There are projects here in Varanasi, as we speak, and not only, that are using the blocks. We're selling in Bangalore. We're selling in Bangalore. It's a bigger market for us. Why? Because it's 20 years ahead. South India, sorry to say, is 20 years ahead from North India. So they want to save energy. And they want to give to the owner at the end both a healthy house, which cement products do not give. Nothing is more healthy than clay. You eat from clay plates every day. Your cups, you take your hot coffee, I do, in clay cup. It's nothing healthy. Imagine a wall that is not healthy. Imagine a wall that if a crack happens, the water absorption of the material you put in there is 50%. It will increase its weight by 50%. Your design was not made for a 50% increase of the wall. Clay products and ours, because we're privileged location-wise, is maximum 11. No matter what you do to it, it will not take more than 11. And it's the standard for high-quality products. Very soon in our site, you will see a certification. It's called the BDA. The BDA certification is from the United Kingdom. We will be the only company, not British, that will have it. They don't give it for free. And I don't mean money. They don't want to give it. But they cannot do otherwise because they cannot match our quality. The Brits cannot match our quality. That is all I have to say. I'm willing to answer any question you want. And we'll be at the stall. We'll go to the presentation. Yeah. These are the benefits of interlocking vertical perforated clay blocks. And we have the S series now introduced. We have introduced the S series, which comes with PU foam insulation filled inside. This will reduce the U value to 0.6. So apparently you make your house zero energy. 0.6, 1 minute, 0.6 means
that in essence, the thermal load that the wall has taken throughout the day from the sun, in the hot days, did not reach the inner side of the house. The house temperature hasn't felt it. So in the cooler days, hours of the day, it cools faster. And thus it becomes a zero energy house. So vertical perforated blocks are the load-bearing blocks, and these horizontal perforated clay blocks, these are the partition wall blocks, the filling blocks that we call. So these can be used as facing blocks also, so you don't need to plaster them outside. And even if you want to plaster it, the plaster is maximum to 6 to 7 mm, unlike any other walling material. When you use clay brick, तो उस पे 20 से 22 mm का आपका plaster आता है, इस पे आपका 6 से 7 mm का maximum plaster आता है. You save on cost everywhere using these bricks, while it is mortar, because interlocking blocks में आपका side में y axis पे mortar की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. They get interlocked to each other. We are already using in a few sites in Banaras, Lucknow, Noida, Bangalore, Hyderabad. ये सारी sites पे already use हो रहे हैं interlocking blocks, and interlocking blocks are getting more popular because you have the maximum cost benefits with these interlocking blocks. So it is a lightweight block. जो size है हमारी blocks की, that is equivalent to 5 bricks by volume, and the weight is 50%. Reduced plaster use. There is something about plaster we will be introducing, and I will inform the market of the plaster that doesn't need paint. It doesn't require paint. It will be a very old plaster. The Romans used to use it. It's called Khorasanid. Maybe the architects have known about this. It will contain powder clinker inside. So the colorations will be colorations of brick, from darker to lighter. Actually, if you think about it, this is the color of this country. The color of India is this coloration, this gamma, this range. And there is no paint for life. It doesn't go out, you don't need to repaint it, you don't need anything. It becomes the combination of the two bricks, the brick and this plaster. Actually, there is no maintenance forever. It's there, it's finished. You did it once, it's finished. The perforation, non-perforated, perforated. You know from your math at the university that when you have a perforated, sound drops. Instead of a non-perforated solid, that sound travels with the speed of light. In here, you're up to 60% drop, and sound is algorithmic. So 60% drop practically means, with the combined use of windows with double glass, it means no sound coming in to anything. You don't hear the ambient sound of the city, horns and everything. Next slide. The environmental impact. So we save the environment also, making the product. It is clay. Clay is the most natural product and the most sustainable material that is available on earth. And why we say it's environmentally friendly? Because you will build 2 houses using the same amount of clay as if you have built 1. The density is by 50% down to 60% down, depending on the type of block you will choose. So 2 houses are built and using the same clay as 1 house previously. Sustainable because it's there forever. Clay lasts for a millennium. Nothing will hit it. And a very important fact that, since we're colleagues here, you probably know in France, Béton armé, which is the first concrete after that was used, it's a French word. They were the first ones to use it.
Now they had the beam made out of reinforced concrete, and they used concrete bricks. In the hot season, the concrete brick lost all its humidity, and the same happened with the beam. And that deteriorates the strength immensely of the building. We know what, if you dehydrate something, what happens. Now, if you have a cement beam and you have a block, clay block is a memory bank of 11% humidity no matter what. So in the dry seasons, it feeds humidity to the beam. The beam doesn't dehydrate. And it triples its life. There are cases, many cases in France now, that they're throwing down the buildings because they realized that the cement is not there anymore. You catch it and it trickles. And it's happening. So these are the few cost-effective benefits of these blocks. Next slide, please. This is again about the sustainability, energy efficiency. The last one on the very end is, I did this. It says the selection of all construction materials, whether block, brick, cement, is a one-time decision. You only decide on this once, and you put it on your building. Choosing incorrectly can lead to long-lasting consequences, such as increased energy consumption, inadequate protection against environmental events, fire, sound, and more crucially, maintaining a healthy environment. Now I want to explain you something that was used in Europe and stopped very quickly. They had a clay wall, insulation, and another clay wall. And they said, okay, we insulated it. We have a very nice building now. Wrong. Why? You have blocked, you have a continuous insulation going from top to bottom, right? Between the two bricks. Double windows, very well closed. What happens with the humidity that is inside that is created inside the house? It goes to the first wall, passes it, hits on the insulation, what will it do? It's high on entropy. What will this insulation, this humidity do? Return. What have we created? The perfect bacterial and microbe environment. So what do? We open the window. The minute, ladies and gentlemen, that we opened the window, we threw all the insulation parameters out of the window. Because we have an open space that takes everything. If you see our blocks, you will see that the insulation is inside the holes. There is continuous mass from inside going outside, which means the internally created humidity, which is significant, trust me, you've seen it on occasions in your own houses, has a pathway to travel outside. And it's very important. Europe has stopped making cheap projects because the cheap projects at the end of the day are very expensive. You've all heard what happened in Greece, my country. You've seen it in the news probably. We became a submarine. The rain that we accepted from the climatic change, the rain that one small part of my country took, the amount of rain, is what Germany takes in a year. Germany, they rain. You can hardly see the sun. And one small part, let's say 5 times, 10 times Varanasi, took all the rain of what? 800 tons per 1,000 square meters. 8,000 tons. 800, sorry. 800 tons. Can you imagine? So this is very, very important to make a healthy house. And this is the range of our facing bricks. These are the extruded bricks in different colors, different blends.
And all these bricks, these are all natural, made of natural clay. No additives, no chemicals are being added to give these colors to this brick. It is just the different composition of clay that we mix and create these colors by firing at different temperatures. Next please. These are the handmade range. This again goes the same. We have different blends and different colors. And FAQs. These are the FAQs about the blocks. So if you, we invite questions from you if you have anything to ask about these vertical perforated and horizontal perforated blocks. We are done with the presentation. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you, madam. Okay, so thank you so much, Badlani ji, for the presentation. Next, I want to invite Anindam Banerjee from Shyam Steel. Anindam Banerjee from Shyam Steel. Okay, Shivam Sharma from Suko. Shivam Sharma, please be on the stage. So, good afternoon everyone. I am Shivam Sharma from Suko India, and we are a German aluminium system supplier for all the kind of the external glazing solutions, be it doors, windows and facades. So this presentation is all about Suko, who we are, a brief introduction about what system windows are and what are their use, and finally what we do. So, as I already told, we are a German-based company. This is our headquarters in Bielefeld, and this is the heart of the entire global operations. We have been present from past 70 years and currently operating in 81 countries. Talking about Indian perspective, we have been operating from past 10 years, and with the fabrication network of 60 fabrication partners, along with the 150 employee base of Suko India itself, we are providing services to the clients, architects and our own fabrication partners. Be it designing the windows, be it helping architects and developers with the execution of the projects, be it the end execution with our fabrication partners and after sales services. It is all possible with the 150 employee base, and each and every person has a role to play. Now over in this clip, you can see an explosion of a window, which is bringing out all the hidden components which are present inside this. And with this clip, I just want to bring light to the fact that there is a big amount of difference between just the aluminium window and the system aluminium window. In this system window detailing, you can see an exploded image of a slider vent frame on your left and a top hung vent frame on the right. And all these components, you see that these are not just composed of aluminium profile. It has so many fixing components, sealing components, aesthetic components. And with this, we need to take care of the fact that the compatibility and the quality of each and every component has a crucial role. And that's where our USP lies, that we are not just designing the aluminium profiles. We are designing each and every component which is making the window functional, performance-oriented and aesthetically beautiful. So, you can be well aware of the fact that once the window is installed and fabricated, the right performances, required performances are evenly met. Now, what we do? So, I'd like to start with, we do villa projects. So, no matter how you want to dress up your villa project with our windows, we have every solution, be it contemporary designs, British architecture, with the help of Georgian bars or the arch windows. We can, clad it with any kind of the color, be it powder coating, be it wooden coating, be it anodizing. We have the entire kitty of solutions for you. Bringing some of the reference project, this is Residence 145 by Charles Voigt. And the main element of this house is the corner sliding opening solution designed for their courtyard. Next is the Sea Owl Villa in Goa by SAV Architecture, a pure example of a contemporary design. Carbonado Residence in Panipat,
designed by 23DC Architects. And finally, Saurav Agrawal Residence in Ahmedabad by SM Architects. Then next, we do glazing facades. We have all the kind of the glazing facade solutions, be it curtain wall solutions, semi-unitized, unitized solutions, which can be utilized for the commercial projects, hospitality projects, and government institutions. Some of the reference projects you can see the Max Towers in Noida, Shivarik Shilp in Ahmedabad, and IGI Airport Terminal 3 ATC Tower. And it is required because the right performances in terms of acoustics insulation in IGI Terminal 3 and higher wind load in Max Towers are evenly met for the project. And finally, the top of the nation, the G20 summit is, everybody is knowing about it. So Bharat Mandapam, where this convention is going on, we are proud to say that the glazing facade was executed by us in this project. And we also do hotel projects, so the excessive performance requirements in terms of acoustic insulation and aesthetic requirements, we have been widely adopted by all the top hospitality institutions like Hyatt Regency in Dehradun, the Centrum in Lucknow, Doubletree by Hilton in Ahmedabad, Sahara Star Hotel, the canopy and the glazing work has been executed by us. And the list goes on. That are the projects which we have executed just in North India. And there is a separate list for the South and the West region. And finally, the skylights. So as the urban spaces are getting more and more dense, I can really understand that it is very difficult to find the right source of natural light coming in just from doors and windows. And that's where the crucial role of skylight comes in. And I understand your fear that the glass canopies might have leakage issues. So with our solutions, you can be free from the fear and you can completely expect it like an RCC slab work on the top. Just the difference is it is bringing natural light onto your spaces. So on the left, you can see that there is an AOC solution and we also have a sample of it kept in our booth. So you can come visit us and find more details about it. And all type of customizations in terms of design, like on the right you can see the pyramid design is there, the circular designs, all the kind of the glazing solutions we can do. That's it with my presentation. You can find more detail about us in our website www.shuko.in or you can connect us anytime from info@shuko.in. More or less, for further details, you can please visit us in our stall. We'll be glad to help you in every of your projects and we will be so glad to dress your projects well so that we can meet your intents as much as we can. Thank you so much. So, looking forward, after this presentation, we will go for the lunch. And the next presentation is from Arindam Banerjee from Shyam Steel. Where is the pointer? Good afternoon to all of you. It's a great opportunity for us. First time we are representing our brand under the banner of UP Architect Associations in Varanasi. Basically, Shyam Steel is one of leading manufacturer of reinforcement steel in India. We are the manufacturer of TMT rebars along with 70 square RNL as a primary make of all government projects. This is our corporate information of our company. Being a primary producer, we are having integrated steel plant at Durgapur in West Bengal, where our total production capacity is 1 million ton, one of the fourth largest manufacturer of reinforcement steel as well as CRS TMT rebars. We are also in-house accredited laboratory NABL and one of the renowned production, and our total turnover is 5,000 crores and we are having pan-India presence. This is our product portfolio. Being a primary producer, we are producing sponge, MS billet, TMT bars and CRS bars.
for all kind of grades, FE 500D, 550D, RM2, 8mm2, 36mm dia. These are the latest certificate and licenses of our company which prove us as a primary producers as well as integrated steel plant. These are the major clients in India who have approved our brand as a primary producers along with SAIL, Tata, RNLs. Like Indian Railways there, then National Highway Authority, EILs, NPCC, PWD, RIDES, NHPC and other departments also there, it has been mentioned clearly. These are the major contractors who are procuring our materials on regular basis for their prestigious projects all over India. Now I will discuss about the manufacturing route of TMT bars. Basically in India, there are 4 types of manufacturing routes. One is PF routes, that is blast furnace routes to basic oxygen furnace routes. Another is DRI EF routes, that is direct reduced iron to electric arc furnace route. Codex BOF route, that's codex furnace to basic oxygen furnace route, and EIF, that's electric induction furnace. Basically these 3 routes, that is BF, EF and codex, these 2 routes denote as a primary producer manufacturing process, and EIF, there's a lot of huge number of manufacturers are there in India who are using scraps, and by the help of electric induction furnace they are producing secondary make TMT bars. And this is the production process. Now I will discuss about Shyam Steels adopting DRI technology. This is our integrated steel plant situated at Durgapur in West Bengal. Inside the plant we have 3 separate units. That is DRI, SMS and rolling mills. We are using, being a primary producer, as a coal, iron ore and dolomites. In DRI plant we are making sponge iron. After that we send it to electric arc furnace for melting and enter refining process of crude steel. And after that we produce billet. Billet is the second product. And after confirmation and determination of all chemical compositions as per IS 1786 specification, we are sending to our rolling mill for production of TMT bars through Thermex process. This is the picture of raw materials, iron ore, coal and dolomites. And this is the all units of our integrated steel plants. And this is electric arc furnace. It is absolutely new technology, and this furnace will help us to produce the quality steel by removing all kind of impurities and with the achievement level of sulfur phosphorus percentage as conforming to IS 1786. And this is the final product of TMT bars, which is produced through our integrated steel plant, which is after and this is the in-house quality control system of our finished product, semi-finished product. Being a primary producer, we have the setup of integrated lab testing facility accredited by NABL for chemical and physical properties determination. And these are the properties. And this is the final product which is ready for dispatching the project as well as local market also. And these are the major government departments in Uttar Pradesh who approved our brand for their day-to-day major projects like UPPWD. And these are the major projects in India where Shyam Steel used, like Calcutta Metro Railway project, Delhi Metro Railway project, IIT campus, IIT BHU campus, all government and central government projects. So please consider Shyam Steel in your approved make along with all other primary producers. And we are having very good distribution network in Banaras also. Thank you.
Okay, thank you so much. And we have to proceed for the lunch. So I would like to request जो भी हमारे गेस्ट मेंबर्स हैं वो पहले लंच कर लें, और जो भी हमारे वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं वो मतलब जो कमिंग 20 मिनट्स है उसमें स्टॉल विजिट कर लें, ताकि एक साथ इतने लोग खाना खा भी नहीं पाएंगे, तो इट विल बी गुड, सारी मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगी। तो सारे जो गेस्ट हैं वो पहले लंच के लिए प्रोसीड कर लें, उसके बाद वीए मेंबर स्टॉल विजिट आफ्टर 20 मिनट्स आप लंच के लिए प्रोसीड कर लें। थैंक यू।
खाली करवा दें। बता चुकी हूँ, कोई नोट किया है।
हाँ रिलीज को नहीं, मैं फोटो भेज जो लिखा है मैंने रिलीज वो भेज रहा हूँ। सब बना दो। अभिषेक 3 फीट का गैप है, 1 फ्लैट का गैप है। अतुल इसके बाद ECM है ना, ECM में लाइव नहीं चलेगा शायद से ना, ECM में लाइव नहीं चलेगा ना, अच्छा मना करना होगा यहाँ पे, वो कैमरा वाला उसको मना करना होगा। ECM में लाइव नहीं चलेगा, मना करना कैमरा वाला वो आएगा। कर रहे देविता उसके ऊपर फीलिंग कुछ कर सकता है कि नहीं लगता? हाँ फीलिंग कर पाओ।
पास इसका फीलिंग कौन सा है? फीलिंग कौन सा है? गोल्डन है। आप भेजो उनको सीनियर अपने पास कौन कौन से कलर का है? गोल्डन डालते हैं ये वाला।
आ जा फटाफट जरूर को नीचे वाले बॉक्स पे चले जाए नीचे वाले बॉक्स खाली बॉक्स है अबे छोटू माइक से हट के बात कर जाके बोल आ रहा हुआ माइक ऑन है हाँ वो नहीं वो माइक पोडियम का माइक चेक चेक अबे छोटू का बातें छोटू दूर से बोल रहा है
बाहर से आ रहा है क्या? चेक करना है सर, आगे करेंगे ना फिर जब आप बैठेंगे वो सेंटर पे समझा दिया, ऑफ कर दो। यूपीए यूपीए लगा लो ना। चलो ठीक है, मैंने अभी ऋषि को बोला ठीक है पूरा प्रेसिडेंट रहेगा ना सेंटर का उसके बाद क्या हुआ मिस्टेक, क्या परेशान हो? करता है आ रहा है, हम चेक कर लेंगे एक बार। अब इसको 100 रुपया वैसे लगाना है, नहीं वो गेट बंद नहीं होगा, तो कह रहा है क्या होगा, एंट्री बंद नहीं होगा ना। एक बार ट्राई करो ना, जो एलईडी है एलईडी के बराबर करो, हो जाएगा सब। और इसमें ट्रस्ट में लाइट मारा है, आपको भी मारा है, पहले बताया सेंटर में करो ना इसे, हेलो ये उधर भाग रही है, सेंटर में करो ना इसके, ये यहाँ से भैया आगे कराने को बोला था। एक मिनट मैं करा रहा हूँ बाबू, यहाँ पे लेके आना, ये टेबल पे तुम जा खड़े हो, पंकज जी
होस्ट होगा कि होस्टेड होगा? अब मैं कहाँ से उसमें हटाऊँ, वो तो बाइक नहीं चलती है। होस्ट की स्पेलिंग गलत है। पुराना वाला चला दो क्या? पुराना वाला है मेरे पास। चला के देखना एक बार। ऑन करना पड़ेगा मतलब यहाँ जो पुराना वाला आपको फाइल दिया था ना इसका, ये ब्लैक वाला बोला चला ही जा रहा तो देखा इसमें होस्ट की स्पेलिंग गलत है, होस्टेड आएगा HOSTED। सेंटर में लटका देना, ये रखा हुआ है। नीचे हो रहा है। ये वाला चल जाएगा? ये पहले फाइल मिली थी हम लोग को। ये नीचे वो दिख नहीं रहा ना, वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन, तो सर्टिफिकेट छूट जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सही तो है ना, वो समझो वो आएगा आपका होस्ट की स्पेलिंग गलत है। हाँ सही है। एटलीस्ट ये तो आएगा ना बैकग्राउंड से ही।
अच्छा, जो जो मेरा है अच्छा, तुम बोल रही हो जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो भी तुम्हारा है, मेरा है। अच्छा, अभी तुम बोल रही हो कैसे लग रहा है कि वो भी सोई हो कैसे प्रोग्राम है कैसे प्रोग्राम क्या राहुल कैलेंडर में चला
हेलो चिराग प्रतिज्ञा अभिषेक
तो काम सीखने की जरूरत है। कौन भड़कता है ऊपर जाके बोलो। क्या किसी के लिए
चेक 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 चेक
देंगे तो उतना काम मैं करूँगा। हाँ उतना ठेका दे दिए उतना कर दूँगा। हम लोग का था कि जैसे सुनना था खाली जो पैसा खर्चा किया हम लोग खाना वाने का जो बिल किया था उसको देख लिया। अच्छा बुक है वो मेरा है। पहले ही दिन आप दे दो यहीं पर लोग जाएँ और किसी कम पड़ रहा तो गिलास में रखना वो भी उठा पड़ा। खाली अगर यही प्रोग्राम रहता तो पूरा इतनी मेहनत इतना टाइम इतना पैसा इसलिए होता है उसमें सही बात जैसे वैसे तो नाम आप लोग को कंटिन्यू है इसको भी निर्माण 2023 से ही करना चाहिए वो उसको ब्रांड कर लेना चाहिए कि जो भी आवे वो करे ऐसा ईयर डालो। हाँ ईयर डालो बोलने में आसान रहता है याद रखता है 23 वाला ये हम फिर आपको जैसे 30 में हमें रहना पड़े रहेंगे तो अरे इधर आइए सर हम लोग तो छोड़ के जा रहे हैं। आप ठीक है ठीक है रहना पड़ेगा अभी कुछ छोटा नहीं है सुबह हमने तय कर फिर सामने से
Hello, hello. I request everyone, please take your seats.
शिफ्ट कर दे शिफ्ट। तो हम उनके साथ थे और आज तक रहेंगे। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। तो आप लोग काशी में हैं तो हमारे यहाँ इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। हमारे यहाँ शुरुआत और किसी भी चीज का अंत महादेव कभी बोला जाता है। और अपार्ट फ्रॉम कि वो किसी भी रिलीजन का हो, महादेव बोलने में हमारे बनारस में किसी को भी शर्म नहीं होता, ना उसको कोई इसके धर्म को अपोजिशन होता है। तो आज शाम को जैसे कि आपको पता है कि हमने CCM के बाद गंगा बोट राइड के लिए, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वहीं दर्शन के बाद डिनर के बाद हम वहाँ दर्शन करेंगे। तो हमें लगता है 4-5 बार तो आप लोग को महादेव बोलना ही पड़ेगा शाम में। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक साथ हम लोग हाथ उठा के बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब लग रहा है काशी में हो रहा है इवेंट। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। Myself Architect Payashwini Jaiswal, Joint Secretary of Varanasi Architect Association. Also, I am the one of the youngest member of the association, and I welcome all of you in the 73rd Executive Committee Member Council meeting. So, first, after that, I want to invite few respected our committee members on the dais. First of all, I request General Secretary of Varanasi Architect Association, Architect Himanshu Srivastava sir, on the dais. President of Varanasi Architects Association, Architect Rajesh Kumar Dixit sir. Treasurer Varanasi Architect Association, Architect Shailendra sir. तो अब हमारी जो होस्ट है वो 3 होस्ट आ चुके हैं डाइस पे। अब हम लोग अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इनवाइट ट्रेजरर फ्रॉम उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन, आर्किटेक्ट अमित अग्रवाल सर। जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन, आर्किटेक्ट अंकित अग्रवाल सर। प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, आर्किटेक्ट जागेश कुमार सर। पैट्रन उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन, आर्किटेक्ट योगेश चंद्रा सर। So now we have all respected committee holders on the stage. Now I want to hand over my podium to Architect R.C. Jain sir, who is the founder president of Varanasi Architect Association. So please give a round of applause and welcome R.C. Jain sir. He is the most senior most architect of Varanasi. बहुत बहुत धन्यवाद पैसिल जी। मैं आज के इस स्थापत्य समागम में यहाँ पधारे हुए समस्त आर्किटेक्ट बंधु और आर्किटेक्ट बहनों का बहुत बहुत वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मुझे वो पल याद आता है जब अंकित ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं चाहता हूँ कि इस बार की जो है ECM और GBM वाराणसी में हो। मैंने कहा ये हो जाएगा। फिर हम लोगों को लगा समय, जब इन्होंने तिथि बताई तो लगा कि बहुत कम समय है। फिर जागेश जी का फ़ोन आया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि ये हो। तो हमारे वाराणसी आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के सभी मेंबर, उनके अंदर बहुत उत्साह भर गया और उनका असर हम लोग यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग जरूर से ज़रूर करेंगे।
बड़ा ही अच्छा लगता है जब हमारे युवा साथी जितने आर्किटेक्ट्स हैं सब ने मिल के रातों दिन स्पॉन्सर से बात करना और सारे इवेंट को मैनेजमेंट करने का बहुत ही सफल प्रयास हुआ और आज उस प्रयास का फल आप सबके समक्ष है। मैं उन सभी युवा अपने साथियों को वाराणसी आर्किटेक्ट से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन का गठन 1993 में हुआ था। उसमें हम लोग सिर्फ 10 आर्किटेक्ट्स थे और उस वक्त से ये यात्रा प्रारंभ हुई। पिछले 4 वर्ष पूर्व तक हम लोग की संख्या से लगभग 30, 35, 36 हुआ करते थे, मगर कोरोना काल के बाद से हमारे बहुत से युवा आर्किटेक्ट्स आए और हमारे वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन को उन्होंने बिल्कुल नया जागृत रूप दे दिया। इसके लिए पुनः मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने हमारे आर्किटेक्ट एसोसिएशन को बिल्कुल एक्टिवेट कर दिया। आप सब आज एक बात अभी मेरे सामने एनके शर्मा जी हैं और हमारे अशोक कुमार जी, आप सबको तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, अभी आपस में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ये हमारे रुड़की में हमारे सीनियर रहे हैं, इनको अपने बीच पा करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। और सर, मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ कि आज मैं कई वर्ष बाद आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। मित्रों, वाराणसी एक आध्यात्मिक नगरी है और एक राजधानी है। मैं कह सकता हूँ ये एक आध्यात्मिक राजधानी है। इसका अनुभव मैंने बीवी दोषी साहब के साथ किया। आपको बताना चाहूँगा कि बीवी दोषी साहब की एक छाप यहाँ पर ज्ञान प्रवाह बिल्डिंग बनी है, लाइब्रेरी बनी हुई है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी हुई है। उसमें मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में लीजेंडरी आर्किटेक्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं वो बीवी दोषी साहब थे। उनके अंदर किसी प्रकार का ईगो नहीं था। ये बात मुझे क्योंकि आप सभी आर्किटेक्ट से सामने महसूस करके होता है कि एक आर्किटेक्ट का कैरेक्टर क्या होता है। मुझे याद है एक बिल्डिंग बना रहे थे, उसमें हम लोग बिल्डिंग में जब गेट के सामने 2 बिल्डिंग बन रही थी तो उसमें एक पुरानी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आ रहा था। तो मैंने कहा सर अगर ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हटा दिया जाए तो यहाँ प्रवेश करते ही गंगा माँ दर्शन करेंगी। आप विश्वास मानिए, इतने सहज आर्किटेक्ट थे। उन्होंने कहा नहीं यार ऋषभ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए। और उन्होंने तुरंत अपने डिजाइन में मॉडिफिकेशंस कर दिए। यहाँ पर एक जलकल बिल्डिंग है, बहुत पुरानी, अंग्रेजों के ज़माने की है। उसमें बिल्डिंग के एलिवेशन की बात हो रही थी, कैसा एलिवेशन में मटेरियल डाला जाए। तो हमने कहा सर यहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसमें स्तूप जो सारनाथ में स्तूप छोटे छोटे ब्रिक्स का है, ऐसा कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ की कला को हम लोग को प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को तुरंत उस प्रोजेक्ट में डाला। तो आज मुझे लगता है कि वाराणसी नहीं, पूरे भारतवर्ष में जब से नई सरकार आई हुई है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत से विकास के कार्य हो रहे हैं जिसमें हम लोग की अहम भूमिका है। वाराणसी विकास आर्किटेक्ट एसोसिएशन का एक रोल जो आज काशी विश्वनाथ धाम आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उसमें यहाँ के आर्किटेक्ट्स का भी रोल रहा है। मैं ये बताना उचित समझता हूँ। हमारे बीच में श्यामलाल सिंह जी आर्किटेक्ट हैं। श्यामलाल जी, आपसे निवेदन है एक बार खड़े हुए। ये पहली बार ये वहाँ पर आर्किटेक्ट के रूप में विश्वनाथ मंदिर के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी ने मिल करके जो एक कॉरिडोर की कल्पना विश्वनाथ धाम की देख रहे हैं, इस योजना में हम सब अपना कुछ सहयोग दे पाए हैं। तो ये एक सुखद अनुभव रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होनी है, उसके बाद कल GBM होना है। और यही कहूँगा कि आप लोगों का इसके अच्छा होगा, आप लोग अच्छा अनुभव करेंगे। किसी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो हम वाराणसी के आर्किटेक्ट्स आपकी सेवा में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक अपने अंकित जी को हैंड ओवर करना चाहूँगा। Thank you, Arsijan Sahab. I would like to welcome all the delegates, dignitaries, seniors and fellow architects for the 73rd Executive Council meeting of UPAA hosted by Varanasi Architects Association. One thing I want to clarify that non-executive council members can attend this meeting but they cannot take part in any discussion. Now I directly come to the agenda of the meeting.
First of all, we have lost our beloved architect Dinesh Kumarji, who was the immediate past president of UPAA. So I would like all to stand up for 2 minutes silence. Past secretary of UPAA. 2 minutes silence. And architect S.K. Gupta ji from Muzaffarnagar. Om Shanti. Now I will like the President to call meeting for order. विभिन्न उत्तर प्रदेश वास्तविक संगठन के चैप्टर से आए पदाधिकारीगण तथा बनारस आर्किटेक्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम समय में इस संगठन की गरिमा को बनाए रखा। और जैसा कि हमारी इच्छा थी और हमारी संगठन का भी ये उद्देश्य रहा है कि पूर्वांचल और पश्चिमांचल और मध्य के सब मिल के काम करें, एकजुट के काम करें। हमारी वास्तविक विधिकीय जो सलाहकार समिति के रूप में या इंडिविजुअल के रूप में जो हमारे आर्किटेक्ट्स लोग फ्रेटर्निटी काम करती है, हमारे समाज का जो है उत्थान होता रहे, उनको योगदान मिलता रहे। और मुझे क्योंकि मैं बनारस काफ़ी 10-15 साल से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं तो उस दिन का याद करता हूँ कि जब यहाँ पे पहली एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीट करी, उस समय हमारे श्यामलाल जी और आर.सी. जैन साहब थे और भी काफ़ी लोग थे, कुशवाहा। तो ये था कि एक अच्छा रेकॉर्ड बने, हम लोगों के बीच में एक सौहार्द बना रहे। जो हम एसोसिएशन के लिए काम करना चाह रहे हैं, लोकल लोगों की भी फील्ड जो है उसके अंदर उनकी एस्पिरेशंस हैं, उसके अनुसार हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब्जेक्ट तो बहुत कुछ है हमें करने के लिए, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आर्किटेक्चर प्रोफेशन या इसके बारे में ज़्यादा न बोलते हुए मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि कुछ हमारे वर्किंग, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1989 में जब हमारा संगठन बना था, उस समय सभी लोग यंग थे, हमें भी ज़्यादा डिटेल में मालूम नहीं था। तो जो आफ्टर 33 इयर्स ऑफ वर्किंग जो चेंजेस आए हैं, उनको हम लोगों ने लिस्ट आउट करने की कोशिश करी। और हमारे पैटर्न साहब जो योगेश चंद्रा जी हैं, वो राइट फ्रॉम द वन डे एसोसिएशन की फॉर्मेशन से लेकर अब तक जुड़े रहे हैं और आज भी एक्टिव हैं। मुझे बड़ा फख्र है इस बात को कि वो हमारे डे टू डे वर्किंग में भी हमें सभी एसोसिएशन के मेंबर्स को जो है सहयोग करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, अपना जो है सहयोग प्रदान करते हैं किसी भी डिसीजन लेने में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनरल सेक्रेटरी महोदय से कहूँगा कि वो अपना कार्यक्रम को आगे गति दें। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि सारे मेंबर्स अपना एक शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़। वायरलेस माइक। सर वहीं पे
मैं आर्किटेक्ट जी एस शुक्ला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट अजय सिंह, आर्किटेक्ट अनुराग कुशवाहा, चैप्टर काउंसिल वाराणसी, आर्किटेक्ट सिंह वाराणसी, आर्किटेक्ट चंद्र प्रकाश चावला वाराणसी, ऋषभ चंद्र जैन वाराणसी, हर हर महादेव। मेरा नाम बलराम कुमार है, मैं यूपीए का एक एम्प्लॉय हूँ। अंकित सर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जबकि अमित अग्रवाल सर मुझे अकाउंटेंट कहते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, एम्प्लॉय हूँ। थैंक यू। आर्किटेक्ट प्रतीक जैन मेरठ, आर्किटेक्ट विनायक गुप्ता फ्रॉम मुरादाबाद एंड वाइस प्रेसिडेंट यूपीए। आर्किटेक्ट अक्षर फ्रॉम मुरादाबाद, जॉइंट सेक्रेटरी यूपीए। आर्किटेक्ट चिराग गुप्ता, प्रेसिडेंट मेरठ आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट अभिषेक जैन, ट्रेजरर मेरठ आर्किटेक्ट एसोसिएशन। नमस्कार, आर्किटेक्ट गोयल फ्रॉम मेरठ। आर्किटेक्ट अल्पम मित्तल लखनऊ से। सर आर्किटेक्ट योगेश त्यागी, सेक्रेटरी आर्किटेक्ट एसोसिएशन नोएडा। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा नोएडा, इसी नंबर। आर्किटेक्ट नितिन रपड़िया, ट्रेजरर आर्किटेक्ट एसोसिएशन नोएडा। आर्किटेक्ट नितिन राज, वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी। आर्किटेक्ट विशाल खरे, सेक्रेटरी इलाहाबाद आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट सुबोध गरुड़ा, प्रेसिडेंट इलाहाबाद आर्किटेक्ट एसोसिएशन। I am architect Anil Bharti from Varanasi. जय श्री कृष्णा, आर्किटेक्ट विपिन गोयल फ्रॉम मथुरा वृंदावन आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट जतिन गोयल, जॉइंट सेक्रेटरी हापुड़ आर्किटेक्ट एसोसिएशन। नमस्कार, आर्किटेक्ट कुमार अभिषेक, प्रेसिडेंट हापुड़ आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट पूजा सारिस्वा, प्रेसिडेंट गाजियाबाद आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट सचिन नमस्कार, आर्किटेक्ट निर्मिता मेहरोत्रा, ग्रेटर नोएडा। आर्किटेक्ट शिवातो सिंह, वाराणसी। आर्किटेक्ट दानिश कादरी फ्रॉम वाराणसी। आर्किटेक्ट नीतीश कुमार पटेल फ्रॉम वाराणसी। आर्किटेक्ट राजेश कुमार सिंह, वाराणसी। आर्किटेक्ट एस.के. गौतम फ्रॉम गाजियाबाद। नमस्कार, आर्किटेक्ट शलभ सक्सेना, प्रेसिडेंट बरेली आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट रविंद्र सिंह, ट्रेजरर कबीर आर्किटेक्ट एसोसिएशन। नमस्कार, आर्किटेक्ट विवेक भाटी, ग्रेटर नोएडा। आर्किटेक्ट रजत अग्रवाल, आगरा। आर्किटेक्ट अरविंद अग्रवाल, प्रेसिडेंट गोरखपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट मनीष मिश्रा, गोरखपुर। गुड इवनिंग, मैं हूँ हिमांशु आर्य, मैं हूँ सेक्रेटरी गोरखपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन। नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट निर्भयनाथ दीक्षित, जनरल सेक्रेटरी मुरादाबाद आर्किटेक्ट एसोसिएशन, मुरादाबाद से। नमस्कार, आर्किटेक्ट प्रदीप गुप्ता, वाराणसी। नमस्कार, आर्किटेक्ट कुणाल कालरा, वाराणसी।
Architect Rohit Gupta from Varanasi. Architect Swarni Verma from Varanasi. Good afternoon, everyone. I'm architect from Varanasi. Good afternoon, everyone. This is Architect Vikas Tiwari from Varanasi. Good afternoon, everyone. I'm Architect Atul Verma from Varanasi. Good evening, everyone. I'm Architect Abhishek Jha from Varanasi. Architect Ali Said Ahmed, Gorakhpur. Architect Shadab Hussain from Gorakhpur. Good afternoon to all the dignitaries present here. Namaste. Myself, Architect Ankush Rai from Varanasi. Architect Amar Rajwar from Varanasi. Architect Rajneesh, from Bharat. Good afternoon, everyone. My name is Prakash Vastav, an architect from Varanasi. Architect Shubham from Bhadohi. Architect Bakar from Varanasi. Architect Priyanka Singh from Varanasi. Architect S.P. Dhawan from Varanasi. Architect Bharti Patil from Varanasi. Architect Krishna Rathod from Varanasi. Architect Shauridev from Varanasi. Good evening, Architect Shreyash Pandey from Varanasi. Good afternoon, Architect Sudip Pandey from Varanasi. Good afternoon, Architect Jayesh Tiwari from Varanasi. Architect B.K. Sharma, Agra. Architect Ashwani Shiromani, President, Agra Architect Association. We have come to Varanasi with a team of 19 members from Agra. Architect Ankur Mangle from Agra. Architect Ankur Mangle from Agra. Architect Rajiv Dwivedi, Agra. Architect Ashwini Sharma from Agra. Architect G.P. Bhatnagar, Agra. Shashi Shiromani, Founder President, Agra Architect Association, Agra. Architect C.S. Gupta, Founder Secretary of Agra Architects Association. Architect Kiran Gupta from Agra. Architect Archana Yadav from Agra. Architect Atul Rai from Varanasi. हेलो एवरीबॉडी, शक्ल दिखा दूँ आपको सबको। नाम ले लिया था जैन साहब ने। आर्किटेक्ट एन.के. शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ मेरी जगह है गाजियाबाद से। थैंक यू। नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट शशांक मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। Namaskar, Anshu Singh, architect and urban planner, Lucknow. Architect Vipinjay Kumar Patel, Vice President, Lucknow Architects Association. नमस्कार, आर्किटेक्ट गौरव सैनी, ग्रेटर नोएडा से। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार चौधरी है। मैं ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आर्किटेक्ट प्रशांत पाल सिंह, प्रेसिडेंट लखनऊ आर्किटेक्ट एसोसिएशन। आर्किटेक्ट धीरेन्द्र मिश्रा, रिप्रेजेंटिंग कानपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन एज सेक्रेटरी। थैंक यू। Architect Babika Goyal, Noida, and new member UPAA. और इसका श्रेय बलराम जी को जाता है। Thank you. Architect Anil Verma, President, Kanpur Architect Association. Architect Sandeep Bishnoi,
Coordinator, Kanpur Architect Association. तो सबसे पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि अभी 3:45 ऑलरेडी हो चुका है और हमें बोट लेना है, मतलब पहले हमें घाट पहुंचना है यहाँ से, उसके बाद हमें बोट लेना है फॉर द बोट राइड। और हमारा अभी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है बनारस में फॉर द बोट राइड, टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। तो 4:45 को हमें इस ECM को रैप अप करना है, जिसमें हमारे जितने भी गेस्ट हैं, VA के मेंबर्स हैं, सारे आर्किटेक्ट्स अलाउ है उस बोट राइड के लिए और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए प्लस डिनर के लिए। तो आफ्टर दैट मैं आर्किटेक्ट श्यामलाल सर को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे कि वो जो हमारे पैटर्न UPA योगेश चंद्रा जी को फैसिलिटेट करें। श्यामलाल सर प्लीज कम ऑन स्टेज। पवन, अबे सागमा आगे क्या खड़ा हो जा रहे हो? सागर भैया President of Varanasi Architect Association, Architect Rajesh Kumar Dikshit sir, to Architect Jogesh sir, the President of UPAA. Sir, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। Secretary Varanasi Architect Association, Architect Himanshu Srivastava sir, to General Secretary of UPAA, Architect Ankit Agarwal sir. Treasurer, Architect Shailendra Kumar sir of VAA, to Treasurer UPAA. Architect Amit Agarwal sir. I request Architect Ankit Agarwal sir to please hand over this podium. Our next agenda point is General Secretary report. So first thing is कि अभी हम लोगों ने अपनी नई वेबसाइट चालू करी है और जितना भी हमारे पास डेटा था, जितना भी आर्काइव्स था, हमने सारा ही डिजिटाइज करके डिजिटल फॉर्म में वेबसाइट के ऊपर अपने अपलोड कर दिया है, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल थे। इसके अलावा सोशल मीडिया में हम ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स हमारे एक्टिव हो गए हैं और हमारी बहुत स्पीड से मेंबरशिप भी बढ़ रही है, उनकी सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। ऑनलाइन मेंबरशिप हम लोगों ने चालू किया था अभी अपना, जो हमने लास्ट ECM में भी बताया था। तो अभी हमारे पास ऑनलाइन मेंबरशिप, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू काफ़ी सारी मेंबरशिप्स हमारे पास आ रही हैं। जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज़ के जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं हमारे, हम वो सब लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर हमारा कंप्लाइंस पूरा चल रहा है इस टाइम। और लास्ट ECM से लेके अभी तक हमने 30 न्यू मेंबर्स ऐड करे हैं UPA की फैमिली में।
Now our total strength of members is 544 members. कुछ जो नए चैप्टर्स हैं जिन्होंने अभी कुछ जो मेंबर्स हमारे पास जुड़े हैं वो लखनऊ, मुरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, बदायूं और इलाहाबाद चैप्टर्स के हैं। कुछ जो गवर्नमेंट चैप्टर्स थे या जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं हो पा रही थी जिन चैप्टर्स के अंदर, वो कुछ चैप्टर्स अभी हम लोगों ने चालू करे हैं। अलीगढ़ में और गोरखपुर में भी अभी जाके सर और मैं मीटिंग में गए थे, तो कोशिश हमारी है कि वो चैप्टर भी रिवाइव हो जाए। और मुजफ्फरनगर में भी थोड़ी एक्टिविटीज़ अभी एसोसिएशन की चालू हुई हैं। सहारनपुर चैप्टर और अयोध्या चैप्टर में भी हम काफ़ी डिस्कशन में हैं, जिससे कि उनकी रेगुलर वर्किंग में वो आ सके। उसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम, जो हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं या जो इश्यूज़ हमारे पास आते हैं एज यूपीए, जो टेंडर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, वो हमने रिपोर्ट किया था यूपीआरएनएन में, तो उन्होंने वो टेंडर अपना विड्रॉ किया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से भी रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लोग हैं। सीटीसीपी यूपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर को भी हमने कई सारे लेटर्स भेजे हैं, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार, चीफ हाउसिंग कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उसके बाद टेलीकॉम कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड, एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमने अपॉइंटमेंट के लिए रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी चल रही है। अभी लास्ट हमारी मीटिंग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर प्रेसिडेंट से भी हुई थी, जो हमने ग्रुप में और वेबसाइट में अपने अपलोड भी किया है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। एंड कल्चरल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम संपर्क में हैं कि हमें अपॉइंटमेंट मिल पाए और हम अपने इशूज़ उनसे डिस्कस कर पाएँ। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर को हमने लेटर भी दिया था फॉर अमेंडमेंट्स इन आर्किटेक्ट्स एक्ट, क्योंकि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेटर उसके बाद हमारी एक मीटिंग अभी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी की, जो अभी हम लोगों ने आगरा में कंडक्ट कराई है, जिसके जो इस बार हमारा GBM का और ECM का एजेंडा पॉइंट भी है। हमारे मीटिंग्स के जो कंक्लूजन है वो हम सब लोगों से डिस्कस करना है। उसके अलावा एक हमने लेटर भेजा है, लेटर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स इन द डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस हैज़ बीन सेंड टू द चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी। उसमें हम लोग नॉमिनेटेड पोस्ट होती है, उसमें लोकल चैप्टर का एक आर्किटेक्ट होना चाहिए। ये हम लेटर भेज चुके हैं। उसके अलावा लेटर हमने एक और भी भेजा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को, कि रोका जा सके ड्राफ्ट्समैन और नॉन आर्किटेक्ट्स को प्रैक्टिस के लिए, तो वो अभी कंसिडरेशन में है। अभी हमारी बात चल रही है शामली चैप्टर से एंड बागपत चैप्टर से टू फॉर्म न्यू चैप्टर्स इन यूपी। उसके अलावा एक हमने कमेटी बनाने का कमेटी बनाना चाहते हैं हम फॉर परचेजिंग ऑफ अ परमानेंट ऑफिस ऑफ UPAA। हमें ये डिसाइड करना है वो कौन से शहर में होगा और क्या हमारा बजट होगा जो हम एक अपना ऑफिस परचेज कर सकता है UPA। जो भी हमारे पास कैश डिपॉजिट्स आए थे वो सारे ही अभी तक सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, वो सारे ही हम बैंक में जमा करा चुके हैं टिल डेट। दिस इज जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट। ये पिछली ECM से लेके इस ECM तक की है। नाउ आई विल कॉल द ट्रेजरर UPA टू गिव हिज ट्रेजरर रिपोर्ट। I would like to congratulate all members of UPA on the occasion of the 73rd ECM being held at Varanasi. During the last 1.5 years, our team has worked tirelessly to activate old chapters and create new chapters. A total of 125 new members have been added, leading to an addition of ₹6,25,000 in our account. In addition to that, we associated with Birla Uttam Cement for the Uttam Architects Award 2023 and got a sponsorship of ₹5 lakhs. All the records of UP are now streamlined, and all our data with the registrar of societies is also now streamlined. On the expenses side, we have employed a full-time employee for UPA work, as was approved in the last ECM. We have also made some expenses for the pending issues and dues of the registrar of societies office. A new fixed deposit of ₹7 lakhs has been made, and the balance in the bank account as on date is approximately ₹6 lakhs. One point I would like to clarify is that when Varanasi Architects Association was
facing a problem in opening the bank account, and Himanshu ji called me. So Jagesh ji and me, we came online and we gave the go-ahead for them to use the UPA account in whichever way they feel, and we will provide a full support for that. Lastly, I would like to thank Varanasi Architects Association for agreeing to host the ECM and GBM at such a short notice and organizing such a wonderful event. Thank you. Thank you, Amit ji. Now I would like to call upon Patron UPA Architect Yogesh Chandra ji for his blessings. सबसे पहले तो मैं राजेश कुमार दीक्षित जी का धन्यवाद देता हूँ, वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और हिमांशु श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र सिंह जी, आरसी जैन साहब, सीपी चावला जी और कुलशेष जी, इन सब ने जो है एक इतनी हिम्मत दिखाई है। बाकी काफ़ी एसोसिएशन जो हैं वो बहुत सालों से काम कर रही हैं और बहुत रेगुलर है, मगर पिछले दिनों से इस एसोसिएशन में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कम थी, और उसके बाद भी इन लोगों ने इतना बड़ा एक चैलेंज लेकर के कि यहाँ पर ECM और GBM भी करने की हिम्मत करना। मैं चाहूँगा कि इनके लिए सभी प्रेजेंट यहाँ आर्किटेक्ट्स एक बात हमारा जो ये यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन है, ये पहली बात तो कोई भी एसोसिएशन नहीं ये ना समझे कि ये एक अलग एसोसिएशन है और हम अलग हैं। एक्चुअली में यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन डिपेंड ही जो है आप ही लोगों के एसोसिएशंस पे है, और जब भी कोई काम होता है वो आप ही लोगों की हिम्मतों से होता है। अकेले जो है प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या ट्रेजरर यूटीए जो हैं, जो हमारे 3 पिलर्स हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप लोगों ने मदद नहीं की तो इसलिए एक तो आप लोग ये हमेशा समझें कि आपको मदद करनी है इसकी, तभी यूपीए आगे बढ़ेगा। और यूपीए जो है ये एक रिले रेस की तरह है, नए प्रेसिडेंट आते हैं, नए सेक्रेटरी आते हैं, वो अपने ढंग से काम करते हैं, और उनके काम करने से कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं वो उनसे इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा हमेशा होता है, जब भी डेवलपमेंट होगा उसमें कुछ ना कुछ कमी आएंगी, कमी होती है। और पर आपको बताएं कि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर ना तो प्रेसिडेंट जाते हैं हमारे, ना जनरल सेक्रेटरी जाते हैं। और इसको मैं भी जो है मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को, और जब तक ये सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है तब तक आप सच मानिए कि अगर जो कमियाँ हैं भी वो पूरी हो जाएंगी। इसलिए जो भी मेंबर्स किसी पर्टिकुलर मैटर में इत्तेफाक नहीं करते तो ये मैं उनसे कहता हूँ कि वो थोड़ा सा पेशेंस रख लें और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है ECM में या लेटर भेज के करते हैं, उनको अगले एजेंडा पॉइंट में रख लिया जाएगा, उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। और ये हमेशा से होता आया है कि ECM में इतना कम टाइम मिलता है कि एजेंडा जो रखा जाता है वो 50% पूरा होता है, काम ही नहीं हो पाता। तो अगली बार जो भी मीटिंग करें हो और जो भी एसोसिएशन करे, कम से कम 2 सेशन दे ECM के लिए, तभी कुछ काम हो पाएगा। लास्ट में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और कि आप लोग भी पता नहीं कितनी कितनी परेशानियों में अपने काम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक अट्रैक्शन जो है वो हमारी वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने गंगा आरती का और दर्शन का वो ऐसा दे दिया था कि आप लोग उसमें उसको भी एंजॉय करने के लिए आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर एंटरटेनमेंट के साथ ही अगर मीटिंग्स हों तो बहुत बढ़िया है, आगे भी इस बात का ख्याल रखें।
Thank you very much. थैंक यू पैटर्न सर। सर एक सेकेंड, पैटर्न सर एक बार आगे आएंगे। आप कुछ बुकेज हमें वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन को भी देने हैं। और जागेश सर आप भी आगे आ जाइए। I would like to call President of Varanasi Architect Association, Architect Rajesh Dixit ji. I will request Jagesh sir and Yogesh Chandra sir to present the bouquet to President. Now, Secretary Varanasi Architect Association, Architect Himanshu Srivastava ji. Now, Treasurer Varanasi Architect Association, Architect Shailen Singh ji. Vice President, UP Architect Association, Architect Vinayak Garg ji. Please come on the stage. Architect N.K. Sharma ji, Vice President, UP Architect Association. Joint Secretary, UP Architect Association, Architect Akshat Garg ji. Coordinator, UP Architect Association, Architect Chirag Gupta. कुछ सीनियर्स हैं हमारे वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन के, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम यहाँ पे हो पाया है। आर्किटेक्ट सीपी चावला जी, आर्किटेक्ट अतुल राय जी, अतुल राय जी, आर्किटेक्ट श्यामलाल सिंह जी, आर्किटेक्ट आर.सी. जैन जी, आर्किटेक्ट अनुराग कुशवाहा जी, आर्किटेक्ट टी.एन. सिंह जी, आर्किटेक्ट अजय सिंह जी, आर्किटेक्ट गुलाब शुक्ला जी, आर्किटेक्ट अनुपम कुमार जी, आर्किटेक्ट रितेश जी, आर्किटेक्ट पैशवनी जायसवाल जी, Now I would like to call upon the for chapter report, the chapter representative of different chapters. First, we start from Noida chapter. Anybody, any representative from Noida chapter can give their report. Noida chapter. Awan.
गुड इवनिंग ऑल, माई सेल्फ योगेश त्यागी। मैं अभी लास्ट इवेंट हुई थी ECM 72nd इन ग्रेटर नोएडा। मैं उसके बाद के जो हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हमने एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों का वहाँ पे सोसाइटी में हो गया। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये अचीवमेंट रही हमारी, उसमें हम बहुत दिनों से लगे हुए थे। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके होने के बाद में हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया है। हमने अपनी आर्किटेक्ट एसोसिएशन नोएडा का वेबसाइट लॉन्च कर दी है। हमने अपना एक लोगो रीडिज़ाइन किया है, एक लोगो हमने फ्लोट किया था, उसमें से जिससे सबसे ज़्यादा लाइक्स आए थे वो लोगो हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। थैंक यू। इसके बाद हमने अपने यहाँ मेंबरशिप, जब से हमारा वेबसाइट ओपन हो गया तो हमने अपनी मेंबरशिप ड्राइव ओपन कर रखी हुई है। उस पर ऑनलाइन है हमारा सारे मेंबरशिप। उसका जो पेमेंट है वो भी हमने केवल ऑनलाइन रखा है, कैश का कोई ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में एक खजारिया प्लाई वालों की एक स्पॉन्सर मीट हुई थी, खजारिया वालों की स्पॉन्सर मीट हुई थी। उसमें हमारे पास में एक हमारे यहाँ आर्किटेक्ट विभोर हैं, उन्होंने एक टेक्निकल सेशन दिया था हॉस्पिटल्स के ऊपर, मेडिकल। उसके अलावा हम लोगों ने 2 ECMs किए हैं। एक ECM हमने हाइब्रिड मोड में की थी। हाइब्रिड में कुछ लोग ऑफलाइन हम लोग मौजूद थे, लेकिन जो लोग नहीं आ पाए थे उनको ऑनलाइन ले लिया था। और एक हमारी ECM उसके बाद में ऑफलाइन। दैट्स इट, थैंक यू। Now I would like to call upon the representatives from Agra chapter to give their chapter report. I am architect Ashwani Shiromani from Agra. Last year, in 2022, we very successfully did a conference of 50 years of our Agra Architect Association, which was very successful. After that, we did a trip to Kerala of all the architect members of Agra and gave a session report for the new master plan to be confirmed of Agra. And we keep on doing certain activities from time to time. And I'm proud to say that we keep a very good fellowship amongst each other. That's very important. Representatives of Kanpur Architects Association for chapter report. Hello. Not much. We have come across after the event, the beauty event which we organized, we named IDEA in January 23. After that, we had some follow-ups regarding our launch of websites. That is perfectly on the road now. Then our several ECMs we did, depending upon the next vision of the association, and we formulated that we are going towards enhancing the wisdom part of the practice for the young architects. We wanted to have some sessions for upgradation of their state-of-art information regarding technology and products. So we are in the line and we have planned up the event calendar for different workshops and lectures on different aspects of materials and technology. So that is what we have done so far. Thank you. Representatives from Greater Noida Architect Association, Greater Noida chapter. मेरा नाम अनिल है, मैं ग्रेटर नोएडा
आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन का इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आपने रिपोर्ट रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। पिछला लास्ट 72nd ECM ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ने होस्ट किया था, और जो लोग उसमें आए उन सभी लोगों का धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। इसके अलावा उत्तम आर्किटेक्ट्स अवार्ड जो कि ग्रेटर नोएडा में उसी शाम को हुआ था, लंबी प्रक्रिया के बाद वहाँ अवार्ड सेरेमनी की गई थी। उसमें भी लोगों को मुख्य रूप से कार्य करने का मौका मिला, उसके लिए यूपी आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन का धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। इसके अलावा हम लोग लोकल स्तर पर फॉलोअप मीटिंग्स कुछ हुई हैं जो कि प्राधिकरण के मुद्दों से संबंधित हैं। इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, डोमेन नेम खरीद लिया गया है कुछ समय से, उसकी डिज़ाइनिंग का कार्य कर रहे हैं। एक विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की तरफ से एक छोटी सी शिकायत यूपी आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के लिए दर्ज कराने के लिए मुझे कहा गया है। उत्तम आर्किटेक्ट्स अवार्ड सेरेमनी जो कि ग्रेटर नोएडा में हुई थी, और उसमें लगभग 350 से 400 लोगों ने हिस्सा लिया था, जो कि एक बड़ी संख्या थी, जिनमें हमने आसपास के दूर दराज के लोगों को इनवाइट किया गया था। उसमें ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के किसी भी व्यक्ति को उत्तम आर्किटेक्ट्स अवार्ड के मंच पर किसी भी इनवाइटी को धन्यवाद प्रस्ताव करने का मौका नहीं दिया गया। कृपया निवेदन है, इसको लाइटली लें। उत्तम आर्किटेक्ट्स अवार्ड के मुख्य फंक्शन में ग्रेटर नोएडा चैप्टर के किसी भी व्यक्ति को अपने इनवाइट किए गए लोगों को धन्यवाद प्रेषित करने का मौका नहीं दिया गया, मंच पे आने का मौका नहीं दिया गया। इसके लिए लोगों की शिकायत है हमारी तरफ से। ना ही ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन का लोगो वहाँ इस्तेमाल किया गया, ना ही अपने कोई भी शब्द रखने का मौका दिया गया। तो कृपया आगे के कार्यक्रमों में सभी लोगों से निवेदन है कि होस्ट अगर कोई कर रहा है तो उनको ये मौका दिया जाना चाहिए कि अपने गेस्ट इन्वाइटीज़ को कम से कम थैंक यू बोलने का मौका उस कार्यक्रम में दिया जा सके। Representatives from Meerut Architects Association. Hello everyone, I am representing Meerut Architects Association. Currently, we are 91 members in our association. Recently, in April, we had elections and architect Chirag Gupta was elected as president. In this new session, we are conducting more and more house meets that equals to every month. We made an approved list of contractors working in Meerut. We had regular meets with the different Meerut authorities for problems related to fertility. We had around 7 sponsors meet in last 6 months. Now we are conducting an exhibition on 9th and 10th of December. Thank you. Representatives of Muradabad Architects Association. Hello everyone, I am Architect Nirbhay Dixit, General Secretary, Muradabad Architects Association. I would like to highlight certain points which our association is doing in our tenure. We have conducted the 78th ECM of UP Architects Association. We are also conducted monthly architects meet with different companies as sponsors. In the last 2 to 3 months, we have conducted with Adani Cement, we have conducted the architects meet, in which we have invited engineer Bhavesh Trivedi ji from Surat, especially to give the highlights on the recently innovations in concrete. We have also signed certain MOUs with different healthcare sectors for the families of our architects and the employees in our offices.
We are also actively participated in the Moradabad Development Authority and the development authorities like Nagar Nigam and other sectors, in which we have given a special master plan development presentation to in presence of Vice Chairman of Moradabad Development Authority, and we have also given a special presentation from our association in the course of city development plan. Thank you. Representatives from Bareilly Architects Association. नमस्कार। सबसे पहले वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन को तहे दिल से आभार कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, और अंकित जी को और जागेश सर को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और बताने का, अपने पार्टिसिपेट करने का मेंबर्स के साथ मौका दिया। बरेली आर्किटेक्ट एसोसिएशन से रिसेंटली मैं सितंबर 22 में ही इलेक्शन हुए थे और एज अ प्रेसिडेंट आई वाज इलेक्टेड। पिछले 8-10 महीनों में ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। हमने रेगुलर मीटिंग्स की हैं अपनी, कोविड की वजह से थोड़ा सा शांत था तो रिवाइवल का हमने पूरा प्रयास किया। वेबसाइट हमारी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें सारे मेंबर्स के डेटा अपडेटेड हैं। मेंबरशिप ड्राइव हम अपने लिए एज वेल एज यूपीए के लिए कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कुछ यंगस्टर्स अराउंड 8 नए मेंबर हमारी फैमिली में जुड़े हैं, और सून वेरी सून वी आर ट्राइंग कि जो मेंबर्स हमारे यहाँ से यूपीए के मेंबर नहीं हैं वो यूपीए को भी ज्वाइन कर लें। रेगुलर मीटिंग्स के साथ साथ हमने कुछ कंपनी स्पॉन्सर्ड एक आईपीएल मैच ऑर्गेनाइज करवाया था, ग्रीन ने ऑर्गेनाइज किया था। अगस्त के मंथ में हमने एक ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए प्लांटेशन ड्राइव चलाया था। रेगुलर होली पे, न्यू ईयर पे फैमिली मीट्स हमारी हो रही हैं। मोर और लेस दिस इज इट, एंड वी आर ट्राइंग कि हम कुछ और छोटे छोटे इवेंट्स जिससे कि म्यूचुअल बॉन्डिंग हमारी बनी रहे और हम अपनी मेन बॉडी के साथ जुड़े रहें, इसका प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। Representatives from Allahabad Architect Association. Allahabad. प्रयागराज, मगर एक्चुअली इलाहाबाद ही है नाम अभी उसका। एक्चुअली जिस समय हम लोग ने एसोसिएशन को रजिस्टर कराया था उस समय इलाहाबाद आर्किटेक्ट एसोसिएशन ही था, तो उसको रजिस्टर्ड है नाम तो अभी चेंज नहीं कर पाए। हम लोग इस वर्ष ग्लास पे और इंटीरियर ग्लास के साथ और इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे बहुत सारे 2 सेमिनार किए। डिफरेंट कंपनीज की जो आर्किटेक्चरल मीट होती है वो मंथ के एंड में हम लोग कराते रहते हैं। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग ने इस बार साइकिल की एक रैली निकाली थी, बाइकेथॉन करके। वो बहुत ही मीडिया ने अप्रिशिएट भी किया और बाकी लोगों ने। टाइम टू टाइम हम लोग का फैमिली गेट टुगेदर भी होता रहता है। GBM मीटिंग टाइम टू टाइम रिपोर्ट होती रहती है। इस बार हम लोग बहुत सारे नॉन आर्किटेक्ट्स प्रयागराज में ऐसे हैं जो आर्किटेक्ट नाम का टाइटल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कैबिनेट अथॉरिटी से हमारी कई बार मीटिंग हो चुकी है पर्सनली, वहाँ के सचिव से और वहाँ के अध्यक्ष साहब से, कि एक आर्किटेक्ट लिस्ट जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटी में सामने बोर्ड पे लग रहा है। हमारे कोविड में हमारे जो पास प्रेसिडेंट थे आर्किटेक्ट उमेश श्रीवास्तव जी, उनका निधन हो गया था, तो हमारी एसोसिएशन उनके नाम को याद रखने के लिए उनके नाम से एक यंग आर्किटेक्ट्स अवार्ड का भी शुरू कर दिया है। जो हमारे नए आर्किटेक्ट्स आते हैं प्रयागराज में
तो उनके लिए हम एक कॉम्पिटिशन कराते हैं यंग आर्किटेक्ट्स का, जो उमेश सर जी के को ट्रिब्यूट करते हैं हम लोग। थैंक यू। Architects from Lucknow Architects Association. Representative Prashant Pal sir. Namaskar. Lucknow Architect Association, one of the most active association of UPAA Association, और हम लोग करीब करीब हर महीने ही कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। फिलहाल होली पे हम लोग ने वुमेन्स क्रिकेट मैच कराया था। उसके बाद में फिर हम लोग ने एक मेकिंग ऑफ इकाना स्टेडियम का ACC सीमेंट्स के साथ में प्रेजेंटेशन रखा था, जिसमें संजय सिन्हा सर ने प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद में रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आर्किटेक्चर, इस पे पैनल डिस्कशन ये नॉलेज सीरीज के तहत हम लोग कर रहे हैं और एक इसका सीरीज हो चुकी है। नेक्स्ट सीरीज 16 सितंबर को यानी नेक्स्ट सैटरडे हम लोग कराने जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन के साथ में जनवरी 2024 में 5-6-7 जनवरी में हम लोग एक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट प्लान कर रहे हैं, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस सारे चैप्टर्स की टीम्स को हम इनवाइट करेंगे। इसकी फर्दर डिटेल्स आपको अंकित जी दे देंगे। गोल्फ भी डाल सकते हैं अगर हम लोग को उतने प्लेयर्स मिल जाते हैं। अनुपम सर उस पर इनिशिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी अनुपम सर, अशोक सर और अनिल सर ने कन्वेनर बनने के लिए इसके लिए एग्री किया है और दिस विल बी अ मेगा इवेंट ऑफ यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन। थैंक यू। Thank you, Prashant Pal sir. Architects from Hapur Architect Association. नमस्कार, मैं कुमार अभिषेक, प्रेसिडेंट हापुड़ आर्किटेक्ट एसोसिएशन। 31 दिसंबर 2022 को हमने अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म करने का डिसाइड किया। उससे हमने शुरुआत की। 11 मार्च 2023 को डिस्कशन एंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ द HAA, हमारी नाम HAA है, जिसके मैं शुरुआत की एंड हाउ इट वर्क्स के हिस्से लिए गए। 24 मार्च 2023 को एक स्पॉन्सर मीट हुई GBM की तरफ से। 20 अगस्त 2023 को हमने अपनी एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल कर दिया है, जिस पर हम आगे वर्क कर रहे हैं। बेसिकली रेगुलर मीट होती रहती हैं जो अब चल रही हैं। अभी हमारे जो एक्टिव मेंबर हैं 20 मेंबर हैं एसोसिएशन में, और 2 लाइनें लिखी है मैंने, चाहूँगा सभी सुने इसमें कि राहें आसान नहीं होती, मुश्किलें कम नहीं होती, की है छोटी सी शुरुआत उम्मीदों को से पार पाने की, जोश है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे अपने एसोसिएशन। थैंक यू। Architects from Gorakhpur Architects Association. Good evening, everybody. Myself, Architect Arvind Agarwal, President, Gorakhpur Architect Association. We have more than 100 architects at present practicing in Gorakhpur, and we can boast of an architectural college in Gorakhpur, PIAD, Purvanchal Institute of Architecture and Design, which is run by our architect Manish Mishra. He is the HOD of the college. And we can boast of having the oldest practicing architect C.P. Hingorani, who's of 85 years of age and is still practicing. He is the oldest practicing architect in the entire country. Yes, sir. Although we are in the
process of getting our organization registered. We held the second ECM in 1990. I think very recently UPA President and Secretary they had visited, and they motivated us and they have lifted our confidence, and we are in the process of registering our association, and our architects are doing a lot of development works with the Development Authority, especially architect Manish Mishra, architect Srivastava ji, and since ours is a city, CM city, so a lot of development projects are going on and a lot of our architects are involved there. So we hope for a good coordination and good support from UPA, and all the best and good luck to Varanasi Architects Association for hosting such a grand event. Thank you. Representatives of Varanasi Architect Association. Very good evening, all. This is Nitin Raj, Architect, Joint Secretary, Varanasi Architect Association. जैसा कि हम सभी लोग अपने अपने सिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, अपने अपने जो है UPAA GBM के बारे में बता रहे हैं, वैसे ही अपनी ECM और GBM अपनी यहाँ भी रेगुलर्स होती रहती हैं। उसके अलावा कुछ BDA से मास्टर प्लान से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसके अधिकारियों के साथ भी हम लोग की मिलकर बैठकें हुई हैं। जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं लगभग 135, उनके अलावा हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके कुछ न्यू मेंबर्स को ऐड ऑन करने की कोशिश भी की है और काफ़ी लोगों को ऐड ऑन किया भी है। साथ ही साथ जगह जगह बीच बीच में हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ की भी हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज के साथ भी अभी मीटिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं। उसी के साथ साथ आज हम लोग आपके साथ बैठे हुए हैं एज स्थापत्य। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे बीच में आप लोग हैं और हम लोग आपको होस्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। Representatives of Mathura Vrindavan Architects Association. Vipinji. Hello everyone. Myself Vipin Goyal, President Mathura Vrindavan Architects Association. After 72 Executive Council, we have recently inaugurated our inaugural assembly with the presence of Mr. Architect Rajiv Dwivedi sir. We are currently 22 members, and right now we are also open entries for further membership. 7 entries are already collected. We are finalizing rules and constitutions. We are collectively meeting in development authorities these days regarding the promotion of our chapter, because it's a new chapter in our city. Thank you. Any other chapter left for chapter report? Oh, sorry. Ghaziabad chapter. Good evening, everybody. I'm Architect Sachin, and I'm going to talk about our agenda, what we have done so far. We have launched our website and Insta page of Ghaziabad Architect Association. We have done prayer meet for our beloved friend Dinesh ji. We have tried to include work of local architects in presentations. We have added 10 new members in UPAA. Last but not least, we are going to celebrate 50 years of Architect Association of Ghaziabad. And one more thing, we have taken disciplinary action against our member who have shown indiscipline for profession. Thank you. Thank you. Any other chapter or chapter report? Now I will read a confirmation of minutes of 72nd Executive Council meeting held on 25th March 2023 at Greater Noida.
minutes of 72nd Executive Council meeting of UPA. Architect DP Singh, Secretary, Greater Noida Architects Association, welcomed all the dignitaries and delegates for the executive body of UPA and handed over the dice to the General Secretary UPA. Meeting was called to order by the President. Self-introduction of the members, welcome speech by President, General Secretary report of activities of UPA was submitted. It was brought into the notice of members by the General Secretary that the team of UPA is working on many points. First and most important point is to upgrade the website of UPA, and the result of it is before all, by which all the associations are under one umbrella. Many of the things are uploaded on the website, some of the rest which will be uploaded shortly. It was also brought into the notice that online membership of UPA may be taken through the new website. It was said that Instagram, Twitter and Facebook of UPA are also under process, and all the correspondence will be tagged on these platforms also. It was brought into the notice that UPA is in constant touch with the local associations for the formation of new chapters in Hapur. A new chapter of UPA has been formed, and some chapters of Satyapatha and Ayodhya are under process for conducting elections. It was said that around 28 members were added in Mathura, Lucknow, Pilibhit, of Lucknow, Mathura, Pilibhit, Ghaziabad, Moradabad and Kanpur sector. Total members of UPA till date are approximately 472, excluding the members of Haridwar, Roorkee and Dehradun. It was also brought into the notice that the dormant chapters as Aligarh, Muzaffarnagar and Varanasi have been revived. It was stated that the correspondence has been done by UPA for the amendment in Architects Act to Government of India as well as the Council of Architecture. Besides, it has many correspondence has been done by UPA to different departments of government. The registration of UPA has been renewed by the Registrar of Societies. It was stated that the meeting of Action Plan Committee are being conducted in future to outcome these committees will come out. The minutes of 71st ECM held on 5th November 2022 in Lucknow were confirmed. Treasurer Amit Agarwal put his report, but it was not complete. He stated that due to the lack of records, he could not give the complete report. Blessings was given by the President UPA, Architect Diva Chandraji, allotted new membership number and distributed certificates to representatives of chapters and members. Report of various chapters were presented by the members delegate of the present chapters as under. Aligarh chapter report was presented by Architect Deepak Sharma ji. Badaयूं chapter report was presented by Architect Prince Garg ji. Bulandshahr chapter report was presented by Architect Sandeep Garg ji. Ghaziabad chapter report was presented by Architect Smita Mittal ji. Greater Noida chapter report was presented by Architect Anil Chaudhary ji. Hapur chapter report was presented by Architect Kumar Abhishek ji. Kanpur chapter report was presented by Architect Dhiren Mishra ji. Lucknow chapter report presented by Architect Prashant Pal Singh ji. Mathura chapter report was presented by Architect Vipin Goyal ji. Meerut chapter report was presented by Architect Chirag Gupta ji. Noida chapter report was presented by Architect Yogesh Tyagi ji. And Varanasi chapter report was presented by Architect Rajesh Dikshit ji. From the executive committee, following members was present: Architect Yogesh Chandra ji, Jagesh Kumar ji, Ankit Agarwal, Vineet Garg ji, N.K. Sharma ji, Vipul Gupta ji, Amit Agarwal ji, Akshat Garg and Chirag Gupta. Following members of different chapters were present as members and delegates: Architect Sameep Garg ji, Architect Deepak Sharma ji from Aligarh chapter, etc. Special guests present in the 72nd Executive Council meeting were D.L. Nagpal ji, Architect S.K. Gautam ji, Architect Rajiv Dwivedi ji, Architect Anil Mehra ji, Architect Shama Mehra ji, Architect K.K. Asthana ji, Architect Anupam Mittal ji, Architect Atul Gupta ji. The facilitation of President, Secretary and Treasurer of Greater Noida Architects Association was done by UPA. UPA Exemplary Service Award was given to the Senior Architect S.K. Gautam ji from Ghaziabad chapter for his exemplary contribution in the field of architecture. Discussion on the matter raised by Architect Vineet Garg that there should be the representation of architects in government project. It was also discussed that there should be participation of architects in development authorities, which was noted for action. Discussion on the matter raised by Architect Anil Verma ji, President Kanpur Architect Association,
that the draftsmen and other non-architects are working as architects in development authorities, UPA should stop them and an action plan must be prepared to stop such activities, has been noted. Resolved that the previous 9, point number 15, resolved that the previous 9 changes in the constitution of UPA, which are already confirmed in previous GBM, must be informed to the Office of Registrar of Societies of Record, but 10th point put for reconsideration as under. I am not reading all the points. This has been discussed that 9 points will go to the registrar except the 10th one. Point number 16, discussion on purchase of plot of UPA permanent office, resolved that a committee should be formed regarding it. UPA accepted to all chapters that all the members of each and every local chapter should be member of UPA. The local chapter should take efforts to do them. The point of more than one association in same city was discussed, but it was resolved that it is not proper and the issue was turned down by many members. Discussion on amendment of UPA constitution, resolved that the committee will draft a proposal and it will be discussed in the next ECM and the GBM. It is also resolved that the consultant should be employed for constitutional amendments if required, which was approved by the House with reasonable charges to be paid by the UPA. It was resolved that the vacant post of coordinator should be filled by sending the name of architect Chirag Gupta to Registrar of Societies. In any other matter, architect Vipul Gupta ji from Noida chapter raised the point of early circulation of minutes of meeting, which was accepted by the House. Architect Kumar Abhishek ji, President Hapur Architect Association, suggested that for new chapter, recommendations of 2 UPA members should not be necessary, which was turned down by the President UPAA. Further, it was suggested that Architect Dhiren Mishra, Secretary Kanpur Architect Association, that if UPA can provide direct membership, then it will weaken the importance of the local chapter. It was resolved that President UPA has the authority to provide membership to any architect without recommendations from local chapter if he thinks appropriate. Architect Association Noida and Greater Noida Architect Association jointly volunteered. After this, you can raise your objections if any. Architects Association Noida and Greater Noida Architect Association jointly volunteered to host the upcoming ECM and the GBM, which was kept for consideration. On-spot membership registration was done. The executive committee has approved and decided to follow the findings made by the discussion as held above. Vote of thanks was given by the President Greater Noida Architect Association, Architect Anil Chaudhary, to all members present and accept that in future executive council meeting take extraordinary efforts to achieve the target so that we may be able to get the UPA on heights with the cooperation of all the members of UPA. Anybody wants to raise the point? Mike. ले लीजिए माइक ले लीजिए सर। हेलो नहीं मैं कुछ कहना चाहूँगा भाई। ये जो मेंबरशिप के लिए कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को पावर है सर इंडिपेंडेंटली, वो कौन सा क्लास इन्हें पावर देता है? Sir, I think Jagesh sir will elaborate on this matter. कोई भी elaborate कर दे, anyone in the house. Jagesh sir. मेरा दूसरा सवाल और भी है, इससे रिलेटेड जो मेंबर बना रहे हैं, उन पे आप लोग रसीद कैसे काट रहे हैं और मेंबरशिप ड्राइव कैसे चल रही है? माइक एक माइक इधर भी दे दीजिए प्लीज। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये था, कैन आई स्पीक? हाँ जी बताइए सर। पहला क्वेश्चन ये था कि अभी उन्होंने ये कहा कि यू हैव ऑल द राइट्स टू गिव मेंबरशिप टू एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वो किस क्लास में सर? सोसाइटी एक्ट के किस क्लास में आपको ये पावर मिली? यू आर इट्स ए रजिस्टर्ड बॉडी अंडर सोसाइटी एक्ट। देयर इज ए प्रोसीजर टू अलॉट ए मेंबरशिप। मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा, इफ यू हैव समथिंग प्लीज लेट मी नो। इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा पहले एक बात। इसी पॉइंट के ऊपर बताना है आपने, बताइए। आर्किटेक्ट कुमार अभिषेक, अभी जो ये कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, अगर मैं अभी यहाँ से वापस जाते ही यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन बना लूँ अपनी, तो नहीं आपने कहा कि लोकल चैप्टर का कोई रोल नहीं है जिसमें आपने कहा डायरेक्ट मेंबरशिप यूपी में ले ले। लोकल चैप्टर की पावर जरूरी है।
नहीं तो मैं भी आज अपनी एसोसिएशन बना देता हूँ यूपीआर का एसोसिएशन, फिर इसका और उसका क्या होगा? आप लोकल चैप्टर को वीक नहीं कर सकते, लोकल चैप्टर की पावर चाहिए, नहीं तो सिर्फ यूपीए के मेंबर हो, लोकल चैप्टर के मेंबर ना हो। यूपी एसोसिएशन जो बनती है लोकल चैप्टर से बनती है। आई थिंक कुमार चैप्टर को फिनिश करें। लेट मी इंटरव्यू। जब ये लास्ट ईसीएम में रिजॉल्व हो गया कि कोई भी मेंबरशिप विदाउट वेटिंग ऑफ लोकल एसोसिएशन नहीं दी जाएगी, तो ये पॉइंट कहां से रेज हो गया दोबारा से? सवाल ये उठता है कि आप एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, अरे किस क्लास में आपको पावर है, इतना बता दीजिए बस। सर जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है वैसे तो जागीर सर और सर एक मिनट पहले सबके क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इसका आंसर देंगे। नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोकल चैप्टर को वीक ना करें, प्रेजेंट की पावर समझ गए सर, समझ गए आपकी बात। और के भी क्वेश्चन ले लेते हैं सर, एक बार आप माइक पे बता दीजिए। जी, जो मिनट्स आपने पढ़े जिसमें मैंने पॉइंट आउट किया था 50 नंबर है, ये पिछला ईसीएम में लगभग सभी लोग जो लोग बोल रहे हैं सब लोग इस ईसीएम में मौजूद थे। 50 नंबर पॉइंट्स इस तरह से नहीं डिस्कस हुआ था, ये रिजोल्व किया गया था कि बिना चैप्टर की रिकमेंडेशन के किसी को मेंबर नहीं बनाया गया और ये सब समय इससे पास हुआ है। इसको मिनट्स को गलत तरीके से लिखा गया है, इसको ठीक लिखा जाना चाहिए और इस तरह से लिखा जाना चाहिए। सर ये पॉइंट नंबर 15 नहीं है, जो आपका ऑब्जेक्शन मैं नोट कर लेता हूँ। आपका जो ऑब्जेक्शन है सर वो पॉइंट नंबर 23 है। नहीं तो जो व्हाट्सएप पे मिनट्स आई थी वो 50 सर उसमें जो अमेंडमेंट करके दोबारा डाली गई थी जब वो पॉइंट नंबर 23 है, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। तो ये रिजॉल्व हो गया था और जो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, धीरेन्द्र सर भी मौजूद थे, इसमें योगेश त्यागी भी मौजूद थे, तो बिश्नोई जी भी मौजूद थे। मिनट्स इसी तरह से पढ़ी जानी चाहिए जो कि वहाँ एक्टिविटी हुई और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जब भी पढ़ी गई है कि किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो रेज किया जा सके। जी जी, तो सीधी सी बात यह है कि आप रीजनल चैप्टर को बाईपास करके मेंबरशिप नहीं बना सकते, ये उस दिन तय हो गया। सर एक बार माइक ले लीजिए, माइक पे बता दीजिए, बहुत सारे लोग सुन नहीं पाएंगे। ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन का आपके यहाँ जो लिस्ट अपडेट की गई है, जो कि कल अपडेट की गई है संभवतः, मैंने कल देखा है उसको। यूपी आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की वेबसाइट पे ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन में करीब 12 लोगों को अभी इंडक्ट किया गया जो कि ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के कभी सदस्य नहीं रहे, ना ही कभी उन्होंने आवेदन किया है, ना ही कभी किसी मीटिंग में आए हैं। उनका ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं। इसके अलावा 2 नाम पहले से जुड़े हुए हैं जो अब से पहले कभी किसी के संपर्क में नहीं रहे हैं, उनको मैं कई बार कह चुका हूँ लेकिन वो नाम भी नहीं हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा नए नाम जोड़ दिए गए जिनका ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं है। तो कृपया इस तरह की लीगल चीज़ों समस्याओं को नहीं बढ़ाया जाए। आप हम लोग को फोर्स कर रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन करें। आईटी एक्ट में इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है, वो लोग हमारे सदस्य नहीं है। आपने यूपी आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के सदस्य बनाए होंगे, आपको अगर अधिकार है तो हाउस डिस्कस कर रहा है इस विषय को लेकिन मैं ये मुद्दा उठाता हूँ कि ग्रेटर नोएडा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के वो लोग सदस्य नहीं है। ये किसी भी एसोसिएशन के सदस्यों का आप लोगों का अधिकार नहीं बनता है कि वेबसाइट में बिना उनकी परमिशन के किसी का नाम जोड़ दे। पॉइंट आपका नोट कर लिया गया है, आप बता दीजिए। हो चुकी है, उस पर डिसीजन लिया जा चुका है, उसके बाद फिर मेंबर कैसे बनाए जा रहे हैं? और ये आएगा बार बार उसी पॉइंट को, एक ही पॉइंट को बार बार रगड़ते रहो, डिस्कस करते रहो। जब फाइनल हो गया उसके बाद क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या जल्दी बनाना है तो उनको बोलो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आगे लेके आए। पहले लोकल चैप्टर को ज्वाइन करो, उसके बाद सर मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस क्या है। ये सब बातें गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर माइक जरा दूसरा दे दीजिए प्लीज। इलेक्शन नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? सर वो चीज अलग है। और जब सर इलेक्शन नहीं होते हैं उसको आप सर आप पॉइंट को सब्ड्यू कर रहे हैं। पॉइंट एक ही है, उस पर बात होगी सर। इलेक्शन उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ सवाल ये उठता है कि मेंबरशिप कैसे हो रही है और किस तरीके से, क्या आपको चैप्टर्स को कमजोर करना है? चैप्टर्स को कमजोर करने की बात नहीं है। सवाल ये है तो वही है ना सर, आप जूनियर्स को बुला के बैठ के बात नहीं करते हैं, इलेक्शन नहीं करते हैं। कितने ग्रेटर नोएडा की एग्जाम्पल लेता हूँ सर, मैं कहता हूँ आपने 10 साल में कितने इलेक्शन कराएंगे बता दीजिए बस इस बात का। 10 साल में कितने इलेक्शन हुए? सर ये जितने चैप्टर हैं
कितनों में डिस्प्यूट है सर, एक तो जगह छोड़ दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सर पावर किसने दी मेंबर डायरेक्ट बनाने की? मैं उसको GBM में रखेंगे सर, अल्ट्रा वायरस है सोसाइटी एक्ट के, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको, इस मन से बात कर रहा हूँ, आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज अल्ट्रा वायरस एंड इलीगल। सर मैं कोई भी कंट्रोवर्सी है तो हमारे कंट्रोवर्सी नहीं सर, दिस इज इलीगल, दिस इज इलीगल सर, कंट्रोवर्सी नहीं है। हाउस हमारा, एसोसिएशन हमारी है, हम कोई ऐसा काम ना करें जो सोसाइटी एक्ट के अल्ट्रा वायरस हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बात यह है कि हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो टाइमली ना तो बात करती हैं जूनियर से, ना ये आपस में बैठ के इलेक्शन करते हैं। ये मेंबरशिप राइट, ये बताइए पिछले 30 साल के अंदर हर चैप्टर में कितने मेंबरशिप लिए दिए हैं? दोनों विषय अलग है सर, इनको सब्जेक्ट किया जा रहा है, इस तरह की ये सब नहीं चलेगा सर इस तरह से। आप हम लोग केवल मिनट्स की बात कर रहे हैं, मिनट्स के अलावा बात कर रहे हैं सर। एक एक करके अगर बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे। लोकल चैप्टर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आप लोकल चैप्टर को बुला के उनके साथ मीटिंग करके उनसे अलग से बात करें। दोनों अलग अलग विषय है, वहाँ से दूसरे लोगों को बाईपास करके लोकल चैप्टर को कोई बाईपास नहीं हुआ है सर। नहीं बाईपास हुआ सर, सारे चैप्टर कह रहे हैं बाईपास हुआ, आप कह रहे नहीं हुआ सर। इसका जवाब मैं चैप्टरों ने आपको प्रेसिडेंट बनाया सर। सभी लोग कह रहे हैं बाईपास हुआ, मुद्दा केवल मिनट्स को ठीक करने का है, जो मिनट्स में जो मीटिंग का डिसीजन हुआ केवल उस पर बात होना चाहिए। पॉइंट नंबर 23 है, केवल उस पर बात करें सर। अनिल सर, आपका पॉइंट डेटेड है सर कि मिनट्स टाइमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लास्ट ECM के मिनट ECM से 3 दिन पहले आ रहे हैं, आधे पॉइंट्स लोग भूल भी सकते हैं। जब हमने लास्ट बार ये डिस्कशन नोएडा से विपुल जी ने क्लियरली बोला कि आप मिनट्स को टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि उसमें कोई भी मिस आउट ना हो, आपने नहीं किया। आपने 3 दिन पहले मिनट्स भेजे सर। एक मिनट बैठ जाइए। ये देखिए, जो लास्ट ECM हुई है वो विनीत गर्ग जी के प्रेसिडेंटशिप में हुई थी, और लास्ट ECM ग्रेटर नोएडा में हुई है, आपके प्रेसिडेंसी में हुई है। GBM जो हुई थी वो विनीत गर्ग जी के अंडर में हुई थी। उन्होंने उसकी मिनट्स जो है वो देनी थी अंकित जी को, मगर वो नहीं दी। अब इन्होंने जो भी, मैंने इनसे कहा कि जो एजेंडा जो वहाँ पे डिस्कशन है याददाश्त से वो बना लो, और बाकी जो मेंबर कहेंगे उसको ऐड कर लो। और बताइए क्या तरीका हो सकता था उस GBM की मिनट्स बनाने का? आज तक भी नहीं दी वो GBM। सर वो GBM के मिनट्स की बात नहीं है, ECM के मिनट्स की। हाँ, ECM के मिनट्स की। अभी आप लोगों ने चैलेंज करा है प्रेसिडेंट को कि आपको किसने पावर दी प्रेसिडेंट नहीं मेंबर बनाने की। एक मिनट ठहरिए, कोई ऐसा काम ना करें। नहीं, आप सुनिए एक मिनट, आप अपनी कर रहे हैं। आप ये तो बताइए कि आप प्रेसिडेंट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि आपको किसने पावर दी? ये हमारे रूल्स हैं, ये रजिस्ट्रार के यहाँ भेजे हुए हैं, GBM में जो है अप्रूव हुए हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बता रहा हूँ, उसका रीजन भी सुन लीजिए एक मिनट। उसका रीजन ये है कि जब लोकल एसोसिएशन पे मेंबर पहुँचते हैं, वो ना तो उनको मेंबर बनाते हैं, ना उनका रिकमेंड करते हैं, तो वो फिर प्रेसिडेंट को जो है अप्रोच करते हैं। और इसीलिए ये बात GBM में रखी गई, और GBM में ये अप्रूव हुआ कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट मेंबर बना सकता है UPA का, क्योंकि एक मेंबर बनना चाहता है। आज जो है आज वो वाली एसोसिएशन सिर्फ 2-3 बोल रही है जिनके यहाँ ना तो जो अभी प्रेसिडेंट ने कहा ना तो इलेक्शन करते, 20-20 साल से वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, मेंबर नहीं बनाते, और वो अपनी पूरी पकड़ उस पर रखना चाहते हैं। ऐसी एसोसिएशन के लिए क्या करा जाए बताइए? सब एसोसिएशन की शिकायत नहीं है, ये सिर्फ ग्रेटर नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा नहीं, ये सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा का जो है मैटर है। इसके अलावा नहीं, आप बताइए ग्रेटर नोएडा में क्यों नहीं हमारी एसोसिएशन जो है सर उसको बनाने से पहले क्या हमारे यहाँ 18 एसोसिएशन है, उसमें अगर 2 एसोसिएशन को ऐतराज है तो ये गलत है। ये मुद्दा सर एक सेकंड आज भी देखिए, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेरा ही लिखा हुआ है 35 साल पहले, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं जितनी नॉलेज रखता हूँ
यही सोच करके इस कॉन्स्टिट्यूशन के हर रूल्स को बनाया गया कि अगर लोकल एसोसिएशन कुछ नहीं करेगी तो यूपीए क्या करेगा, तो तभी जीबीएम में रखा गया था और जीबीएम में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी कि मेंबरशिप रिक्वेस्ट है सर, अगर आप परमिशन दे रहे हैं एक एक करके प्लीज थोड़ा सर, एक एक करके अगर बात करेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे। प्रेसिडेंट को ये पावर की जीबीएम में अभिषेक भाई ऐसे बीच में नहीं ना, वो माइक आ जाएगा जब आप बोल लीजिएगा प्लीज। सर ये प्रेसिडेंट साहब को पावर किस जीबीएम में दी गई है उसका मिनट्स तो होगा हमारे पास, देखिए कैन बी शेयर दैट। देखिए हमारे यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स ये रजिस्ट्रार के यहाँ भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल भेजी गई है और ये डिटेल आपने मांगी है ना, ये ढूंढ करके भेजी जाएगी, क्योंकि हमारे पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं वो बढ़िया रहे नहीं है ना, एक प्रेसिडेंट ने दूसरे को दिए। योगेश त्यागी सर, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि लोकल एसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं, और इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन अपनी मेंबरशिप ड्राइव चलाएगी, वो डायरेक्ट अपने मेंबर बनाएगी। हाँ बिल्कुल, जब लोकल एसोसिएशन बिल्कुल काम नहीं करेगी जहाँ पे जो भी एसोसिएशन, इसका मतलब ये है सर कि उन लोकल एसोसिएशन को आप अपना पार्ट मानने से इनकार कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे, अगर एसोसिएशन जुड़ी हुई नहीं है। आज एक एसोसिएशन हमारी एसोसिएशन निकल जाएगी, कल को इनकी एसोसिएशन निकल जाएगी। आप कैसे उसको गवर्न कर सकते हैं यूपीए को? नहीं सर शांत हो जाए थोड़ा सा, शायद लड़ाई इस बात के ऊपर है ऐसे बीच में इंटरव्यू करेंगे सर, कोई भी कुछ नहीं सुन पाएगा। जो आपने मेंबर यूपीए में ऐड किए हैं उनको नोएडा वाले का सहायक उसमें से निकाल दीजिए। सर इसका एक मिनट मैं अपना एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। यूपीए के मेंबर है उनके नहीं है सर, एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ खरबंदा सर। सर एक सेकंड सर, आपने जो भी मेंबर ग्रेटर नोएडा के ऐड किए हैं, हम सारे हाउस की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको पहले कैंसिल करिए। जो भी मेंबरशिप आपको लेनी है थ्रू चैनल आएगा, पहले वो लोकल चैप्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद ही होगा। ये कहीं का कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा है तो हम एसोसिएशन में आज यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन से अभी तक मेंबरशिप लिया था, मैं विड्रॉ करता हूँ सर। ऐसा कोई नियम कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपके कहने से कि मैंने वहाँ अमेंडमेंट करा लिया तो आपने अपने से कुछ भी करा लिया। ये बॉडी क्या है? यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन ना। और जब लोकल चैप्टर में आप सुनेंगे नहीं तो काहे की यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन बाइकआउट करते हैं? किस जीबीएम में आपने बता दिया कि बस बात कर रहे हैं? चलिए हम ये सही मानते हैं। पहले कुछ नहीं, पहले आप ग्रेटर नोएडा के उन मेंबर का नाम कैंसिल करिए। सारे आर्किटेक्ट एसोसिएशन की एक डिमांड है, आप उसको पहले कैंसिल करिए, उसके बाद ही कोई बात होगी, उसके बाद ही कोई जीबीएम हो गया नहीं होगी। मुझे लगता सर है ये मुझे लगता है कि हम मूल विषय से भटक गए हैं। हम यहाँ पर मिनट्स को कंसीडर कर रहे हैं। मिनट्स गलत है या सही है इसकी बात करनी है, और जो नए नियम बनाने हैं नहीं बनाने हैं वो बाद में कर लीजिए। अगर इन्होंने गलत लगे तो उनको सही किया जा सकता है। बिल्कुल सर, उसको सही करिए। इन्होंने बिना परमिशन के कैसे मेंबरशिप बना कैसे बना दिया? की बात पहले मिनट्स में बोला जाता। सर आपका पॉइंट टेकन है सर, इतना लंबा एक आदमी को समय नहीं दे पाएंगे सर। आपका जो आपत्ति है वो दर्ज कर ली गई है, आपको बता तो दिया सर कि आज करेंगे 3 दिन से सर कर लेंगे आप। टाइम दो सोच लेंगे क्यों देंगे सर एक मिनट जरा सब शांति बनाए रखें। दूसरा, अभी हमारे को बोर्ड राइड पे भी जाना है, तो जल्दी से अपने 2 पॉइंट्स और हैं हमारे, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक सजेशन सुन लीजिए, सर सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। एक सजेशन सुन लीजिए, जो भी मेंबरशिप आपने 35-40 लोगों की अवार्ड की है, वो सारे मेंबरशिप फॉर्म कंसर्न रीजनल चैप्टर को फॉरवर्ड कर दीजिए सर आप और वो उनसे वेट होकर के वापस आ जाए, उनको मेंबर बना दीजिए। सर मेरा भी कहना यही है, आप बोलने तो देंगे सर, जब तो इस पे सर एक मिनट सर, पहले एक मिनट सर, हमारी भी सुन लीजिए। माइक पे बोलिए सर, माइक पे। दो अलग-अलग है, मिनट्स गलत नोट किए गए हैं पिछली ईवीएम के। सर मैं वही कह रहा हूँ कि पॉइंट वाइज चलेंगे तो
पॉइंट वाइज चलेंगे तो उसका डिसीजन हो पाएगा। अभी जो हमारे मिनट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, मिनट्स में जो पॉइंट नंबर 23 है, जो नहीं डिसाइड हुआ वो करके आपने मेंबरशिप दे दी। सर पॉइंट लिख लिया है सर, उसके ऊपर इतना लंबा डिस्कशन करेंगे तो कैसे होगा सर? सर भैया है सर इस पॉइंट पर वोटिंग करा ली जाए कि मिनट्स में क्या कहा गया था। सर एक सर ऐसे सर आराम से बात करिए प्लीज, लड़ाई का मंच नहीं है ये। जो आपकी पॉइंट है वो सारे नोट किए जा रहे हैं सर, मिनट्स नोट हो रहे हैं सारी मीटिंग के। आप सभी से निवेदन है कि हम लोग की वोट राइट और वोट न्याय में बाकी कल भी हम लोग के पास समय रहेगा। आपसे निवेदन है कि हम लोग कल भी बात कर सकते हो तो सर कल भी कर लें, क्योंकि हम लोग समय बहुत लेट हो रहा है। सर ऐसा मत करिएगा, आपको तो रहना ही पड़ेगा सर। मेरी सभी आपकी के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। जो भी पॉइंट डिलिब्रेशन हो रहा है एक पॉइंट पे मेंबरशिप ड्राइव के ऊपर लेके है। मैं अपनी यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन की वेब अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने ये बात कही थी कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो अपने यहाँ मेंबरशिप ड्राइव चलाएं। मेंबर्स जो भी हमारे नए मेंबर्स बनना चाहते हैं उनको उनसे बात करें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने दिया। ये सबसे पहले शुरुआत हुई आगरा से। आगरा में जो यंग जनरेशन है उनके साथ में बैठ के बातचीत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है आज तक मेरे को इसका कोई जवाब नहीं आया। और ये बार बार लखनऊ में भी मैटर उठा, हमने कहा कि ठीक है चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी 3 महीने 6 महीने होगा फिर कोई जवाब नहीं आता। जब यंगस्टर्स जितने भी हैं जो पास आउट में 20 साल का डिफरेंस है लोगों के अंदर, उनको बुला के बात नहीं होती। वो यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम बताइए हेलो, हमें तो बात ही नहीं करते, बैठाते भी नहीं हमारे पास। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इन लोगों की कार्यशैली अलग है और टुगेदर उनको बैठाना पड़ेगा, उनको कुछ करना पड़ेगा, उसके बात करनी पड़ेगी। अगर इस एटीट्यूड से हम लोग सभी चैप्टर काम करेंगे कि नहीं हम इलेक्शन नहीं करेंगे तो ये गलत तरीका, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। हमें यंगस्टर्स की भी बात सुननी पड़ेगी, सीनियर्स की भी बात सुननी पड़ेगी। और मैं इस बात को इस मन से आह्वान करता हूँ कि जो भी मेंबर्स मैंने बनाए हैं वो राइट पर्सपेक्टिव में बनाए हैं। और मैं इस बात के लिए कहता हूँ कि सभी चैप्टर्स को जो मेंबर्स बने हैं मैं उनको 1 हफ्ते के लिए वापस दे रहा हूँ और वो लोग उसकी इंक्वायरी कर लें। किसी भी एंगल से अगर कोई डेरोगेटरी बंदा है तो उसको तुरंत में उसको जो है उसको सर मेरा इसमें कहना ये है कि सर प्रोसेस जो भी आप कह रहे हैं मैं चैप्टर्स के लिए देता हूँ, वो उनकी इंक्वायरी करके मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे दिए। जो लोग ऑलरेडी मेंबर बन गए हैं उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। सर एक सेकंड सर बात सुनिए सर। हल्ला सर देखिए सर, ये चिल्लाने से कोई डिस्कशन का अंत नहीं होगा। अगर सभी चैप्टर्स में प्रेसिडेंट को पावर दी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और गंगा आरती और हमारा भोलेनाथ का जो है दर्शन का समय हो गया है। इस चीज़ को कल तक के लिए डेवलप किया जाता है। हाँ कल तक के लिए डेवलप किया जाता है। और मेरी अनुरोध है कि जो केवल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। रेस्ट ऑफ द मेंबर जो है वो अपने दूसरा प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। सर अब समय हो गया है, पवित्र मन बना लीजिए। पवित्र कार्य के लिए हम लोग चल रहे हैं। माँ गंगा का दर्शन और भोलेनाथ का दर्शन। ये ECM के अभी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल से अभी जो हमारे मिनट्स भी थे उसके ऊपर भी कई सारी चर्चा होनी बाकी है। तो सर बात सुनिए सर, ऐसे सर बीच में हल्ला करने से आप ये जो खराब कर रहे हैं बहुत सारे, ऐसे सही तरीका नहीं है ये मीटिंग डिस्कस करने का। जो पॉइंट है आपका नोट कर लिया गया है फिर भी ये ऐसा सही नहीं है सर। वही मैं कह रहा हूँ जहाँ पे अभी तक हमारी मीटिंग पहुँची है, इसके आगे पॉइंट्स का हम टेक्निकल सेशन को कट शॉर्ट करके अपना ECM के पॉइंट से डिस्कस करेंगे। ये ECM दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे अभी उसके बिफोर लंच इन द
और अभी सारे लोग प्रोसीड करेंगे सर गंगा आरती के लिए। गाड़ी हमारी सबकी पोर्च में लगी हुई है। जिन लोगों को चाय पीना कॉर्नर में चाय स्टॉल ले लीजिए और अब हम लोग तैयार हो जाते हैं। लॉबी में गाड़ी लग गई है, फिर यहाँ से हम लोग गंगा आरती में निकलेंगे। सबको दर्शन करना है सर। कितना ले रहे हैं? बिल्कुल धीरे लाइनें होती है।